All right, so good afternoon, everyone. Welcome to the day two training program of ours. I believe everybody is settled and my audio is also reaching perfectly. Yes, we're able to hear you. Thank you. So let's go to our sample case studies folder, the file what we have started working with yesterday, naming called corporate case studies. Let's open that. And for information, we have done up to our data clean one. So is there any doubts or queries when you have gone through the recordings or you have practiced something or you have done a quick recap on the same? No, as if now, all good from my side. Okay, Snail. No. It's good for my side also. Okay, great. So let's go to our next sheet, naming called Data Clean 2. Hello? Yep. Yeah, okay. I thought that I'm not able to hear you. No, I'm just waiting that you are opened or not because I'm not sure about it. So I thought to give some time. Yeah, I have All already right, opened. right. So we are in now Data Clean 2. So as I told you yesterday that while working in Excel, 90% cases we receive our data in unclean format. So unless until we clean up the same, the data is of no use. So we have seen one pattern like what wherever we have got some errors or blanks in place, how to deal with the same. Now we are going to see another aspect of our, just give me a second. Mhm. Yeah. So we are going to watch the next type of error what we come across while working in Excel. All right. So whenever you download the data from SAP or ERP system, 90% cases you will be getting unclean data. But there are certain cases the report will be clean, but there are two areas you will be always be finding the trouble. One, the number column will not be in number format, the date column will not be in date format. And unless and until you bring the data and comply with the right format, your data is not going to give any kind of yield in the report. So we are going to discuss on the same. So let me give you the connectivity with our data, what we have with us. Suppose मान लो बॉस ने मुझे कहा कि प्रभास get me the entire fixed asset register. So I gave my respective T code in SAP. I downloaded a data near about 1 lakh record. It comes in this format. Like we have got the asset code. आप देख सकते हैं. Asset description is there, asset class is there. So this is our first problem. Now what kind of problem is it? Like this column is containing the numbers, लेकिन numbers format में नहीं है. तो अब एक भी सवाल मुझे पूछ सकते हैं कि प्रभास आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे जो डेटा है इट्स नॉट क्लीन, numbers are not in number format. Simple. अगर आप यहाँ पे देखोगे in this data set in the top left corner, this kind of green color flag symbols, it's a simple message for us कि ये green color flag symbols क्यों है, क्योंकि जो कॉलम में डेटा है it is not in proper format. तो चलिए ये तो पता चल गया. अभी सवाल ये है how to clean up the same and make it ready. तो हमारे एक्सपर्ट्स कहेंगे कि प्रभास चिंता मत करो, इसको सिलेक्ट कर लो इसे and just go to the yellow color button and over there you can go for the option called convert to number. ये लोग कहेंगे लेकिन गलती से इस ऑप्शंस को मत लेना. ठीक है. तो यहाँ पे ये ऑप्शन अगर नहीं लेना है तो हमारे एक्सपर्ट हमको कैसे सजेस्ट कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली ये जो ऑप्शन है काम करता है बट दिस ऑप्शन इज बीइंग डिजाइंड टू डील विद ओनली लिमिटेड रो आइटम्स लाइक 10 20 मैक्स टू मैक्स 50 रो आइटम्स. अगर आपको डेटा क्लीन करना है देन ये ऑप्शन आप ले सकते हो. बट हमारे पास कितने डेटा है, नियर अबाउट 1 लाख रिकॉर्ड्स. एंड गलती से अगर ये ऑप्शन आपने अपनाया
तो क्या होगा? So basically what is going to happen? You will be inviting the trouble to yourself. Like you will be getting Excel not responding, Excel stopped working, Excel is restarted, all these kind of problems you will be facing. So to avoid all sorts of problems, how Sorry to to deal with? interrupt you. Yes. Ravindra was typing that he's not able to hear. I guess he disappeared then. Yeah, he was asking you something in chat. He has. That's the problem. I asked, this is the reason only why be there on time. So this kind of problem we could have sorted before starting the session. Well, No, he's again there. yes, Ravindra, able to hear now? Hello. Is it audible, Ravindra? Hello. Okay, fine. So now, the moment we are discussing how to clean up our data, ये जो asset class वाला column है, जो numbers लगे हुए हैं, how to clean this and bring it to number format. The best option, what you can do is, पहले देख लो मेरे स्क्रीन पे मैं क्या करता हूँ, एक मिनट समझ लो, then I'll be giving 1 more minute. You can try this also, no issues. See, I will keep my cursor in the first value of my asset class and I'll select the rest. Then I'll go to my data menu. We do have an option called text to columns. So when I go for text to columns, it will take you to a dialog box, something like this. Here, you no need to do anything. Simply go and click this finish button. And immediately you can see the green color flag symbols have been removed. And this is just turned out to be a proper format of the data. And you can do all your necessary calculations further. Give it a try. Yes, Ravindra, able to hear us? Yeah, Hello? now it's audible. Okay. Okay. So we are dealing with our same file, corporate case studies, and the sheet name is called data clean 2. And there we have a fixed asset register, and our asset class is not containing the data in proper format. So how to bring the numbers into number format, we are discussing that. And to Okay. do the same, you have to select your whole column. Then you need to go to your data menu. There you have an option called text to column. And in this text to column, you have to click the finish button. Then automatically those green color flag symbols will be removed from the cells and the data will be cleaned and ready for next level. You can try that. Yeah, sure. Just give me one sec. Can you please repeat? I have to go data and then Text to column, text to column, one option is there. And then click finish. Once you click the text to column, a dialog box will turn up and you can click finish. Those green it is color in flags. the data, right? Yeah, data menu, text to column. Can you see my screen? Yeah, I can see. Yeah, I'm just highlighting Okay. something, the point. Yeah. Yes. Okay, I got it. Then you have to Then click the finish next. button. Finish button. Okay, yeah, got it. Yeah. All right. So Supriya and Snehal, you all are okay with this? Yes. Okay, great. So this is what our solution for the first problem in our SAP driven data or SAP downloaded records. Now we'll go to our extreme right column. You could notice the last column is all about your year. And this is containing some kind of errors called hash value.
So if you randomly pick one cell and see the formula, it is showing a formula called year is already there. In day one, we have already discussed Excel has already an inbuilt formula naming called year, but that year is depending upon our date column. So it is a pretty simple message. Since our date is not in proper date format, that's why year is also fetching errors. So now the question is, if you go and keep your cursor in one of your date value and select the rest, looking at the same and tell me what kind of problem we have in our date column. Is it It's in date general format? format. It's not in. I mean to say, it's not in date format. It's in general. You can't be so judgmental, Supriya. It may be in text also. You never know. So we can't say that without knowing it, that it could be in general. It could be in general Like format. if It we may be in text format. like if I go to any of particular cell, like, and when I click on home, over there in up I can see it's in a general format. That's what you have to do that exercise. Then only you can come to know. But my Mhm. question is, when I selected this, I have established the fact that date is not in proper format. It's in trouble. That's why Yeah. my year is having a problem, right? So my Mhm. question was, when I look at the date, what kind of problem you find or you notice? The problem is with the separator. Like That if you dot. are, yeah, if you are working with a date, the separator you can use as either dash or slash, not with the backslash, only forward slash. So if you have underscore, if you have dot, if you have backslash, or if you have added symbol, any other character except this two, then it is not going to be recognized as a proper date format. So the problem is with the separator. Now, how to deal with the same? Our experts immediately they will suggest you go for find and replace, but all the time that will not going to work for you. So I would suggest you the option which you can work across any version of Excel, any date format, it will work fine. What is that? Let's see. 1 minute, watch my screen. Observe what I'm doing. Next 1 minute, you can try also. Just see. I will select my date. I'll go to my data menu and there I have an option called text to column. So I'll go over here. Now you don't need to do any changes. Directly go for the next button. And once you go to the next, it will show you all the delimiters over here. So here also you don't need to do any changes. Go for again next. And in the third tab, you will be finding by default your column data format shows in general. But technically my data is in date format I'm expecting. Yes. And here most important part is this drop down. Okay, you have to focus. What is that we need to focus? You need to first understand what kind of format your date column is having, you believe. So ideally, if I look at it is showing DDMMYY for my case. So this drop down should display DMY. If it is showing MDY, then this drop down should be showing MDY. If it is not showing, then we should do the changes. And here also you can see the date preview, the format is also showing what kind of format you have. So basically it is a DMY format. So that's why this is also the same, the drop down. Yes, this is the only thing you have to confirm. Now, once you confirm the same, now go and click finish. Now, immediately you could see your date column will be cleaned, and along with that, your year column also will be cleaned. So this is what the best and convenient way to clean up your data by using text to column. Give it a try and confirm your year column is cleaned and fetching the values instead of errors. Done. Yes, it's working. Right, Ravindra? Yeah, done. Okay, great. So this is now people we have understood that whenever you are dealing with your SAP driven data or SAP downloaded records,
how to clean the same. Okay. Now, though we have cleaned our data, but there is one problem in our data. If you notice, our years is having the comma separators. Do you see that? Mm, Right? right. So commas, technically it is allowed only in place of numbers or currency, not with the years. So years cannot be ever expressed with the commas. So now the question is how to clean up the same again. See, no need to go for again find and replace comma with nothing. Don't do all sorts of lengthy procedures. I'll tell you very simple way. Yesterday, if you remember, I told you some shortcuts to change the formats of the cell. Let's have a quick recap. To convert any format to date, what was the shortcut? Anybody? Control Shift hash. Three. Control and semicolon you said, I guess, No, that no, no, the no. dot. Control semicolon to insert today's date. Our question was how to convert to any format to date format. So control, shift, and three. That is the hash key. Any format to number. Control Shift, I think one. Yes. Very good. Control, shift, one. Any format to percentage. Control Shift 5. Control, shift, five. Similarly, any format, if you want to convert into general format, see, exactly on the left side of your one key, can you see one infinitive symbol, one key is there? So this is called your tilde key. Technically, we call it as TILDE, tilde. And you have to combine control and shift. So control, shift, and tilde will be helping you to convert any format to general format. Check it out. Can you see all the commas have been removed in one shot? Tilde. Yeah, it's So happening. this is how we can work out with the keyboard shortcuts, various formats, and that will be very, very helpful, time saving. So you don't need to keep on going to home tab and keep changing the formats from these categories and struggling over there and wasting your time. All Uh, right. Yeah, Prabhas, can you just tell one more time the shortcuts that you told? it's already there in the shortcut list. I guess you have not gone through It's them. there. Okay, okay. I'll just check them out. That is what you should do. Don't worry, I'll show you also where it is. See, Control, Shift, and Tilde Okay, applies okay. the general number format. So the key, okay, it's for keyboard, right? Okay. It's all the formats. See, Control, Mhm. Shift, 4, Control, Shift, 5, Control, Shift, 6, Control, Shift, 3, Control, Shift, 3. All these formats, and this is Control, Shift, 1. Okay, okay. Thank Yep. All right, so data clean 2, what we supposed to do, we got the clarity on that. So can I take that everyone is clear with our data clean 2 exercise? Snehal, Yes. okay, Ravindra, कोई सवाल है? Yeah, you. that Yes. first error which we have removed. What was that error? Why it was coming like that? Which one in this column you're talking about? The first, yeah, yeah. Yeah, so the same thing, if you remember, see, the errors are nothing but, I'll tell you, देखो, ideally, when you go and type, can you see my screen? Yeah, What is this about? numbers. Number. Now, when I type, can you see it immediately goes towards my right side of my wall of the cell? Can you see that? Yes, But if I go and type, suppose ABC, what is this? alphabets. So text. So text Text. Yeah. always inclining towards left. Number is always inclining towards right. Correct? Hmm. This is the default nature of Excel. Now, this number, if I go for it with apostrophe, what happens? This becomes a text. And when it becomes a text, automatically this generates a green color flag symbol. Okay. So whenever you download the data from SAP or ERP, the numbers will be always be coming in this format. Okay. So if you would like to see, I'll take you through one SAP driven data. Just see. So it means Excel is not understanding whether it is a text or it's number. That's why this error is No, no, coming. no, 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 no. It's not understanding.
Excel is knowing, but the data source it is in general format or text format. That's why it is coming up like this. Okay. I'll take you through. Just a sec. Okay, so this is not that much clarity. Right. Now, this is what a best example of SAP driven records. Now, if you look at all these numbers are there in proper number format or the numbers, loan amount, everything. If you look at, but technically, when you download your data, since it is cleaned, it is not showing the data value like this. But whenever you download the data from SAP or ERP, it will coming up like this. I'll show you. Okay. So can you see now? It is showing some green color Yeah. flag symbols. So by Yes. default, it will come always in this format. So you have to clean this, like taking this data and going for data, text to column, next, and you have to go for general to date. Though we are working with amount or currency or numbers, but there is no such kind of format called number. That's why we have to go for date. And why we are going for date? Because though date is such a format, but technically the value is behind only a number. That's why we have to opt date. And then once you click finish, all these green color flag symbols will be removed and the value will be populated in proper number format. So this is the reason why Okay. we have to do all this exercise. Yeah. Hope that brings you clarity. Yes. Yes. Okay. Now let's go to our next sheet, people. Naming called data clean 3. So here, let me first give you the background story of this data. Most of the time, what it happens, people, with us, we receive our data in different formats or different platform. Like sometimes we receive our data in Notepad or Word document or WordPad or .csv files, or we receive our data in a image format or kind of a PDF format. So there are various types of formats we receive our platforms or data, isn't it? And when you look at the other platform, the data seems to be well organized, well tabulated, well formatted. But when you copy that data and try to paste it in Excel for further analysis, then what happens? It goes completely haywire. The entire data goes for toss, and automatic column height will increase or column row height will go for increasing. Automatically, we have no idea, no clue why and how it is happening with us. But unless and until you gather all the data at one place, you can't work further. So we have to spend a lot of quality time for doing a ground level of data cleaning work. Do you all agree? Mhm. ऐसा होता है कि नहीं हमारे साथ? Yes. यस। तो चलिए कुछ इस तरह से हमारे पास भी अभी डेटा है। जैसे कि मान के चलते हैं, सपोज से our friend Ravindra, he is working in a bank portal. Okay, in his laptop, he has logged into a bank software portal and he is working in the bank portal. And where you see that the bank name, bank account number, bank code, everything seems to be well organized, well tabulated, well formatted. So there are near about 10,000 records are there, and immediately he has exported the data to Excel. He logged out from the bank system and he has come back to that Excel file and he could realize that entire data is populated or dumped into single cell like this. Then looking at the data in this structure, Ravindra felt for a while that it is of no use. So immediately he called Supriya because Supriya is the best teammate of his team. And he asked, Supriya, I have got the data something like this. Can you help me getting only the bank codes out of that? ठीक है? So क्या करना है पता चला? डेटा इस तरह से है और जिसमें से सिर्फ बैंक कोड को निकाल के दूसरे कॉलम में देना है. So how to deal with the same? What is the best thing that comes to your mind? जो भी मन में आता है बोल सकते हैं.
Is it that it has only taken the last line, मतलब अगर ये Australia and New Zealand and then there's number and if I can see the bank code which is created for first, those are the combinations which is already over there in B column last में जो numbers के हाँ बाद में. हाँ, तो वही तो है, वही करना है। आप देख सकते हो हर जगह पे बैंक कोड लास्ट में हम्म, ही है, तो बस उसको ओके निकालना। तो उसको निकालना. ओके ओके. Difficult. Conventional method is unwanted data delete करो ओके, ठीक है, manually. चलो ठीक है। अभी इस तरह का सिचुएशन मिलता है तो कैसे हम डील करते हैं? देखो, किसी को भी पूछोगे वो क्या बोलेगा कि हाँ, मैं जितना देख सकता हूँ हमारा बैंक कोड एक्सट्रीम राइट में है। तो एक एक्सेल में राइट वाला फॉर्मूला है जो कि हमको हेल्प करता है डेटा में से राइट साइड से कितना कैरेक्टर चाहिए। तो देखो, पहले देख लो, कुछ करो नहीं, पहले देख लो। यहाँ पे टेक्स्ट है, मैंने लिया, उसमें से कितना नंबर कैरेक्टर चाहिए। सो अगर बैंक कोड की बात करते हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने 8 लिया, तो ये मुझे दे दिया अपना पहला डेटा डेटा का बैंक कोड। लेकिन बाकी को जब अप्लाई करता हूँ, डिड आई रिसीव माई बैंक कोड प्रॉपरली? देख लो, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, मैंने जो हाईलाइट किया है देखो, डिड आई Right. रिसीव माई बैंक कोड्स प्रॉपरली? No, it have just taken the 8 day, मतलब 8 राइट, letters जो भी है. राइट। तो हमेशा हमारे डेटा में बैंक कोड 8 लेटर होगा बोल के कोई गारंटी नहीं है, सामने ही दिख रहा है। हाँ, सब जगह पे 8 कैरेक्टर होता, मेरा काम आसान हो जाता, लेकिन कहाँ पे 8 है, कहाँ पे 7 है, कहाँ पे 5 कैरेक्टर है, ये प्रॉब्लम। सो डेटा इज ऑफ इनकंसिस्टेंट टाइप, दैट इज व्हाट द मेजर कंसर्न ओवर हियर। चलो ठीक है, राइट वाला फॉर्मूला हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, ये पता चल गया। कुछ लोग कहेंगे कि प्रभास, मैं जितना देख सकता हूँ हमारा डेटा जो है स्पेस में से सेपरेट हुआ है। तो हम यहाँ पे जाके डेटा टेक्स्ट टू कॉलम और डिलिमिटर एक लेके नेक्स्ट बना के यहाँ पे स्पेस डिवाइडर यूज कर सकते हैं। तो स्पेस के हिसाब से जहां जहां पे स्पेस लगा हुआ है वहां पे कॉलम डिवाइडर ऐड हो गया। ये हम कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। प्रॉब्लम क्या हुआ, डेटा तो डिवाइड हो गया, डेटा तो सेग्रीगेट हो गए, लेकिन बैंक कोड जो है कभी एच में है, कभी जी में है, कहीं पे एफ में है। सो अगेन मुझे एक एक सेल में जाके चेक करना पड़ेगा, तो फिर फायदा क्या है ऐसा सेग्रीगेट करना? बेटर है मैं खुद जाके कॉपी पेस्ट ही कर लूँ, है कि नहीं? हम्म, तो दोनों ही ऑप्शन अभी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो चलो मान लो अभी सुप्रिया जी हमारे स्नेहल जी के पास पहुंच गई, उनको लगा कि स्नेहल को एक्सेल में अच्छा बहुत नॉलेज है, हैंड्स इन होल्डिंग एक्सपीरियंस भी है। हर कॉर्पोरेट में कोई ना कोई एक बंदा होता है जिसको एक्सेल अच्छा पता होता है, एंड वी कीप डिपेंडिंग अपॉन हिम और हर, है कि नहीं? हम्म, तो मान लो सुप्रिया जी पहुंच गए स्नेहल के पास, स्नेहल ने पूरा सिचुएशन को समझा और उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है डेटा में, तो उन्होंने एक बढ़िया सा फॉर्मूला बनाया, लाइक विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इफ, लेन, mid, find, search, if error and then substitute। ऐसा कुछ बड़ा सा फॉर्मूला कंबाइन करके उन्होंने बनाया, और जब देख रहे हैं फॉर्मूला इज नॉट गेटिंग completed with the close parenthesis, it is ending up with the curly braces, which is completely beyond the understanding of Supriya। किसी को भी समझ में नहीं आएगा। तो सुप्रिया ने स्नेहल को पूछा कि स्नेहल, ये लॉजिक थोड़ा बता दो कैसे काम करता है, थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। तो स्नेहल ने क्या कहा, सुप्रिया यू वेर आस्किंग फॉर ए हेल्प, आई डिड इट, बट आई हैव माई ओन वर्क टू डू ऑल्सो। अगर आपको लॉजिक समझना है प्लीज कम टू माई डेस्क एट 5:30 PM, आई विल हेल्प यू आउट। सो नाउ दिस इज द नीड ऑफ द आवर। सो Ravindra is immediately looking for the same. So without understanding the logic, Supriya came back to the workstation. She started applying the same. Somewhere it is working, somewhere it is failing. Okay? Data is not of consistent type. हम्म. Now Supriya got frustrated. She left everything and she came back to the Stone Age. Like copy, paste, copy, paste, copy, paste. Somewhere or the other, you would have also done in your life. Yes or no? ऐसा हम करते हैं। तो सोचो कितना टाइम लगेगा। हम्म. शुक्रिया। 10,000 डेटा है, कॉपी पेस्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको?
मुझे तो 7-8 घंटे से ज्यादा भी I can't imagine. ठीक है. That's what we can't remove doing this, but since there is a demand of the work, you have to do. So 8 hours एक पकड़ के चलते हैं. But Ravinder, do you have that much of patience to wait for 8 hours? No. बिल्कुल नहीं. बॉस के पास पेशेंस नहीं होता है. इंतजार करने का टाइम नहीं है उनके पास. जो भी है 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा. So now the question is over here, though Ravindra is not convinced with this, but he has no other option because his best teammate is asking for 8 hours. तो भले ही यहाँ पे काम करके सुप्रिया ने दिया, लेकिन रविंद्र के मन में एक सवाल, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क अबाउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ सुप्रिया. And when the question mark arises about the productivity, that leads to a negative impact in the KRA report. And if KRA report is negative, that will be giving an impact to the appraisal form. Do you agree? Mhm. ऐसा होता है कॉर्पोरेट में. तो चलिए, इस सिचुएशन पे 10 घंटा के बजाय अगर मैं आपका काम 10 सेकंड में करवा के दे दूं तो कितना सारा कीमती वक्त बचेगा. बहुत सारा है कि नहीं. Mhm. तो चलिए कुछ देखते हैं. So now we are going to see a beautiful tool over here that is called one of the artificial intelligence tool of Microsoft Excel. पहले देख लो कैसे काम करता है. तो मैंने अपना कॉलम सी क्लीन कर दिया. पहले कॉलम बी में गया, जाके मैं देख रहा हूँ मेरा बैंक कोड जो है यहाँ पे है. ठीक है, मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके उसको पेस्ट किया. पेस्ट करने के बाद ऑन योर माय कीबोर्ड what I am going to do, I am going to press a keyboard shortcut Control E, E for engine. Can you see? Just like a magic show, on your blink of your eyes, entire data is extracted. तो ये क्या है आखिर, ये कंट्रोल ई हमको क्यों पता नहीं था? Because this is called one of the artificial intelligence tool of our Microsoft Excel जिसका नाम है Flash Fill. और ये सिर्फ और सिर्फ 2013 and above versions में पाए जाते हैं, पहले नहीं था. So give it a try and check is it working. Prabhas, can you show one more time? Like I totally got messed up. Okay, you have selected your bank code. Okay. Have you And then, copied and pasted? okay, first I need to do it on my own. Yeah, Okay, okay. you have to copy and paste, and then you keep your cursor in that data which you have pasted, then go for Control E. So Ravindra and Snehal, are you getting the same? Yes. Yes, I got it now. Okay. तो चलो देखो काम कितना आसान हो गया. तो अभी तक ये हमको पता क्यों नहीं था? 2013 में अगर ये ऑप्शन आया है, अभी तक हमको पता नहीं था क्योंकि हमने कभी यूज नहीं किया. बट दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द एआई टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल. नाउ सी द ब्यूटी. अभी ये मान लो कीबोर्ड शॉर्टकट, आपको लग रहा है कि प्रभास मुझे कीबोर्ड शॉर्टकट में बहुत डर लगता है, अगर मैं यूज ना करूं मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, ऐसा मुझे लग रहा है. बट आपको अगर मेनू ऑप्शन में एक बार दिखा दोगे तो वो मुझे पूरा प्रिंट हो जाता है. Anyway, so it's all about your comfort zone, how to register the things. So if you are interested in knowing कि in ribbon menu where I get flash fill, I will tell you. Just see लोकेशन नंबर 1. अगर आप होम में जाएंगे, यहाँ पे मिलता है एक सिग्मा के नीचे फिल वाला बटन, एंड यहाँ पे मिलता है फ्लैश फिल. दिस इज आवर लोकेशन नंबर 1. ठीक है. लोकेशन नंबर 2, यू कैन गो टू द डेटा मेन्यू ऑल्सो. यहाँ पे भी एक मिलता है फ्लैश फिल. देखो डेटा मेन्यू के अंदर ये भी मिलता है फ्लैश फिल, और उसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी दिख रहा है. जस्ट ट्राई टू लोकेट इट. आर यू गेटिंग द सेम? Mm. Will it come it in my version 2016? Yes, yes, yes. I'm not able to find it. Not able to find? You can share your screen. I can guide you. Mm. Is it somewhere near remove duplicates data validation? Yes, yes, yes. In the same column. Just above to remove duplicates, a small icon would be there. Okay, That is called your flash fill. fill, it's there. Flash. Yes. Directly I got an option as Yes, yes. flash. Okay, okay, got it. So this is how people we have understood where this flash fill is, what is the keyboard shortcut, and how to use it. Now, the most important part, flash fill.
पर्पस यू हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स। ऐसा नहीं है कि अपना मन जहां पे चाहता है और अपने मर्जी से हम फ्लैश फिल इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं। फ्लैश फिल इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। देखो रूल्स क्या कहता है, पहले समझ लो जो मैं बना रहा हूँ, फिर बाद में मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा चार्ट बॉक्स में, आप पेस्ट कर लेंगे। देखो रूल नंबर 1, इट सेज दैट एंश्योर देयर इज ए ब्लैंक कॉलम नेक्स्ट टू डेटा कॉलम। मतलब अगर मेरा कॉलम बी में डेटा है, कॉलम सी ब्लैंक होना चाहिए। अगर कॉलम सी में भी डेटा है तो मुझे एक नया कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज अ मीनिंग कॉल्ड एंश्योर देयर इज ए ब्लैंक कॉलम next to data column. Hope it is clear. Rule number 1, I'm asking one by one. Yes, clear. Yes. Right. Now, rule number 2, after flash fill, make paste special values. अब इसका मतलब क्या है, देखो डेटा मेरे पास है, मैंने फ्लैश फिल लेके बनाया, उसको कॉपी करना है। वही जगह पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल क्लिक करना है, और पेस्ट स्पेशल क्लिक करके वैल्यूज सिलेक्ट करना है, और फिर ओके करना है। इज इट रियली नेसेसरी? यस। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, भले ही आपने फ्लैश फिल में डेटा बना के फाइल को सेव करके फाइल को बंद कर दिया हो, लेकिन कल जाके जब फाइल ओपन करोगे आपके डेटा चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसलिए आपको डेटा को सेफगार्ड करने के लिए ये ऑप्शन बहुत जरूरी है। सो आफ्टर फ्लैश फिल, मेक पेस्ट स्पेशल वैल्यूज। होप दिस रूल इज क्लियर। Mhm. Yes. Yes. राइट, राइट। नाउ रूल नंबर 3, create data header only after step 2। मतलब अभी देखो, मैंने पहले डेटा नहीं बनाया, पहले जाके हेडर बनाया, जैसे कि बैंक कोड, और ऐसा करके मैं अपना फ्लैश फिल उसके बाद बनाने की कोशिश की। इट विल नॉट वर्क बिकॉज दिस हेडर विल बी कंसिडर्ड एज ए बेस डेटा बाय Microsoft Excel, and flash fill will not be able to fetch your data properly. So this is the reason why पहले डेटा बनाओ, फिर उसको पे स्पेशल वैल्यू करो, फिर जाके उसका हेडर डालो यहाँ पे बैंक कोड। So this is our rule number 3 over here. Create a data header only after step 2. Is it clear? Mhm. Yeah. Right. Now rule number 4, ensure there is no formula on data column. मतलब अगर कॉलम बी में मेरा डेटा है, एक भी सेल में फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लैश फिल फॉर्मूला ड्रिवन सेल के ऊपर काम नहीं करता है। सो इसलिए क्या करना होगा, पहले आपको कॉलम बी को पे स्पेशल में बदलना होगा, फिर आपको फ्लैश फिल यूज करना होगा। So Mhm. these are the four essential rules of our flash fill people. You have to always remember. And trust me, 90% cases it is going to clean your data over there whenever you use Control E. So kindly go through the rules. Anything not clear, feel free to ask. Yeah, I'm clear with the rules, but before explaining these rules, no, I have used this option and I had some issue. I just wanted Mhm. to show my screen. No Let problem. me share. Yeah. Yeah. Can you see my screen? Yeah. So this is what I got. ठीक है, बंद कर दीजिए, इस पर आप कॉलम को डिलीट कर दीजिए। Okay. नाउ यहाँ पे ठीक है, हाँ करिए, काम करिए जो मैंने बताया था। नहीं, मैंने थोड़ी ना ऐसा बताया था। मैंने क्या Control. कहा था? Okay. नहीं 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 नहीं, पहले बैंक कोड को खाली कॉपी करो, अपने डेटा में से सिर्फ बैंक कोड को पहले कॉपी करो। हाँ, फिर उसको पेस्ट करो, फिर कंट्रोल ई करो। आया?
Okay, I missed this. Okay, हाँ, okay. फिर से अभी कॉपी करो, इसको कॉपी करो, पूरा डेटा को कॉपी करो. Prabhas, my question here again Right is, click, paste special values. Just a minute. Paste sorry. special values. Yeah. Yeah. Now create the data header, bank code. Yes. Yes, Supriya, you had some questions. Yeah, like just we have taken like जो extreme right वाला जो हमारा data था whatever bank code, Right. मुझे सेम just यहाँ पे लेफ्ट हैंड का फर्स्ट डेटा चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यू जो ऑस्ट्रेलिया पहला शब्द है, अगर मुझे हर एक चीज का बस पहला ही शब्द चाहिए तो इज इट दिस गोइंग टू बी अगेन सेम, मतलब वैसे ही करना है? Obviously, you can do that. तभी देख लो. अभी यहाँ पे चाहिए तो हम कर लेते हैं immediately. अभी देखो आप. यहाँ पे मैंने क्या कहा रूल्स, डेटा के बाजू वाला कॉलम ब्लैंक होना चाहिए. ठीक है. So I'll go to my first data set and here I'll select only Australia. I copied that. I went over here. I pasted it. I went for control A. Can you see? All the places only the first word has picked up. सो बिसाइड्स एनी, जैसे कि तो मैं अगर मुझे बैंक शब्द चाहिए तो कुछ भी कर सकते हैं हम ऐसा, राइट? इट्स नॉट नेसेसरी कि दैट शुड बी ऑन राइट एंड लेफ्ट. No. That is what one thing you need to understand. देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा, दिस इज वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल. हमने अपना कोई भी लॉजिक नहीं डाला. डिड आई गिव एनी फॉर्मूला और फंक्शन? नो नो. हाँ. तो ये क्या करता है, कैसे काम करता है, पहले समझना होगा. ये जो लॉजिक खुद बनाता है, कैसे बनाया? अभी हमारे डेटा के लिए जब हमने कॉपी करके पेस्ट किया पहला इंस्टेंस, तो इसने समझा कि कि इस डेटा के अंदर लास्ट स्पेस के बाद जो भी डेटा है मुझे निकाल के वो पैटर्न में डेटा डालना है. हम्म, तो उसने क्या किया, जब हमने डेटा बना के दिया वही पैटर्न को उसने फिल किया. हम्म, सो फॉर दिस डेटा, दिस काइंड ऑफ लॉजिक इट हैज टेकन. कल अगर डेटा अलग होगा, आउटपुट हमको अलग चाहिए, तो उसके हिसाब से पैटर्न भी अलग होगा. So this is what a artificial intelligence tool. It creates its own logic and output जो निकल के आता है, if it is matching with your requirement, then you are lucky enough. हम्म, So we, unless and until we give it a try, we cannot ever know that or we cannot ever predict that कि हाँ यहाँ पे फ्लैश बिल ठीक से काम कर लेगा. हमको एक बार ट्राई करके यूज करना होगा, तभी जाके पता चलेगा कि डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं, डेटा आउटपुट ठीक ठाक हमारे हिसाब से आ रहा कि नहीं, हमको ऐसा चेक करना पड़ेगा. देयर इज नो डायरेक्ट रूल्स फॉर दैट. ठीक है. ओके. नाउ अगेन यहाँ पे वी कैन सी दैट फ्लैप, तो कैन वी अप्लाई दैट फॉर्मूला जो आपने पिछले वाले स्लाइड में हमको दिखाया था डेटा टू क्लीन में, लाइक फॉर row number 13 if we say there's a green flap over here. Row number 13. In fact, over here, yeah, this is not exactly the bank code. See why it is coming up. यहाँ पे बैंक कोड नहीं है. ये डेटा में सब बैंक कोड नहीं है, तो एक्सेल को समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है. एक्सेल क्या क्या कर रहा है, ये एक जो पैटर्न हमने बनाया लास्ट स्पेस के बाद जो भी डेटा है उसको उठाया. इसको पता नहीं है मुझे बैंक कोड लेना है या बैंक अकाउंट नंबर लेना है. राइट. एक्सेल इज नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू सीइंग द डेटा टाइप और आपको क्या चाहिए वहां पे उठा देगा. तो जहां पे बैंक कोड नहीं है, लास्ट स्पेस के बाद जो भी डेटा था उसने उसको उठाया. तो यहाँ पे नंबर्स थे, तो नंबर्स को उसने उठाया और यहाँ पे टेक्स्ट में रखा, तो इसलिए ये ग्रीन कलर फ्लैग सिंबल्स आए. So that's not a case to be worried about. These are unwanted data. You can consider at this state ये सब unwanted data है. ये हमारे बैंक कोड्स नहीं है. ठीक है. Right. So any other questions before proceeding further? No. चलो. प्रभात जी, जो हाँ. फर्स्ट रूल आपने बताया, इज इट रियली नेसेसरी? बिकॉज बाय मिस्टेकली आई मेड वन मोर column in that this first word I took, the Australia, and I did this activity. It is taking. I mean, it is after bank code, that column, but still it is taking. It will. That is what I'm telling. For this data, it may take, but tomorrow if your data changes, it may not take. तो Okay. ये जो रूल्स मैंने कैसे बनाया, around more than 10,000 different varieties of data I have done the R&D, and then Okay. this rules I have framed. आपको ऐसा रूल इंटरनेट में कभी दिखने को भी नहीं मिलेगा, कोई आपको Sure. बताएगा भी नहीं, ट्रस्ट मी. Yeah. तो आपको एक कन्वीनियंट जोन में डेटा एक्सट्रैक्ट करने में ये रूल्स अगर आप फॉलो करोगे, देन यू विल नॉट बी स्ट्रगलिंग. दिस इज द रीजन व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स. Okay. Got it. राइट. तो चलिए,
अभी यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया कि when you have the data something at the end, it is of a consistent type and we use flash fill, we extracted the data. Now the question what we are running in the mind, if we have something in the middle, जैसे कि मान लो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर है जो कि बीचों बीच है, क्या हम बैंक अकाउंट नंबर निकाल के लेके आ सकते हैं? चलो देखते हैं। यहाँ पे रूल नंबर 1, डेटा के बाजू वाला कॉलम ब्लैंक होना चाहिए। पहले देख लो। फिर मैं गया अपने डेटा में से सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर को मैंने सिलेक्ट किया और कॉपी किया। फिर यहाँ पे आके मैं पेस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप नंबर्स कभी उठाते हो दोस्तों, इफ यू डायरेक्ट पेस्ट एज इट इज देन इट विल बी स्टोर्ड एज ए नंबर। लेकिन हमारे बैंक अकाउंट नंबर कुछ जीरो से भी स्टार्ट हो रहे हैं, देख पा रहे हैं आप? सेकंड केस में Mhm. देखो। तो अगर जीरो से बैंक अकाउंट नंबर स्टार्ट होता है, दैट जीरो आल्सो हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस और रोल। आई कैनॉट इग्नोर दैट। डू यू एग्री? Yes. सो इसको इसके लिए हमको क्या चाहिए? जीरो भी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, जो डेटा हमने कॉपी किया, पेस्ट करने से पहले हमको एक सिंगल कोट या अपोस्ट्रोफी का सहारा लेना होगा। सो सिंगल कोट और अपोस्ट्रोफी यहाँ पे मिलता है हमारे कीबोर्ड में, उसको लेके आपको पेस्ट करना है। और जब आप पेस्ट करोगे, इट विल स्टोर द डेटा एज ए टेक्स्ट। इट विल स्टोर द डेटा एज ए टेक्स्ट। देखो इमीडिएटली वो ग्रीन कलर फ्लैग सिंबल आ गया, Mm. right? Yes. So now you can go for Control E and see the beauty. Exactly, including zeros also. If at all any account numbers are there, those zeros has been received. Now rule number 2, we'll select our data, copy the same, and we'll go for paste special value. Then rule number 3, we can go and create the header bank account name or bank account number. Then अगर आपको लगा कि हाँ this green color flag symbols are really annoying, I don't want to see them, no issues. You can select your data, there is a yellow color symbol, उसको लेके क्या करना है, फिर आपको ignore error करना है। convert to number गलती से मत करना, ignore error। तो जब आप ignore error करोगे तो यहाँ से green color flag symbol सब हट जाएंगे और आपका बैंक अकाउंट नंबर भी रेडी हो गया। देखा? तो जब तक आपका डेटा एक पैटर्न में है, flash fill will work like a charm. Give it a try and extract your bank account number. Done. So I believe it's clear. Just give me one sec, not working Sure. for me. Okay, you can share your screen. Yeah. Can you see my screen? Yep. Enter. Then Control E. Then copy paste special value. Then data header. Which option? Create the Which option I have? header. Create the header. After copy paste special value, go to the data header where ampersand sign is there and symbol is there, that you name it as bank name Yeah, yeah. or bank account number.
bank account number. Okay. Right. Now select the entire data and go to that yellow color symbol. Then you go for ignore error. Right. Okay. Yeah. Yeah. All right. So I believe all are clear, Snehal. Yes. Okay, great. Now, once we have done with this, suppose say this is what I have prepared and presented to my boss, and my boss is appreciating my work, and he's saying, Prabhas, you have done a great job, and with no time you could extract the data for me. Like that, he's appreciating. And we know one thing, when boss is happy and appreciate our work, what happens next? He'll give one, mm, I mean to say more assignments Okay. because he knows now So we can do it. definitely, if you're expecting increment, promotion, or elevations to the next level, that is a myth in the corporate world. That is due at the year end only. So immediate, what happens? The expectation level goes high and workload increases. And same thing happened with me. Now, what my boss is saying, try to understand. He's saying, Pravas, you have given me bank code, you given me bank account number. Why don't you get me the bank name as well? Mm, ठीक है तो चलिए आपने तो अभी तक सब कुछ सीख लिया कंट्रोल ई क्या काम करता है फ्लैश फिल के रूल्स क्या है कैसे बनाते हैं सो टेकिंग 2 minutes ऑफ टाइम प्लीज फाइंड द बैंक नेम सो रूल नंबर 1 नेक्स्ट टू द डेटा कॉलम शुड बी blank स्टार्ट You are वर्किंग not विद इट sharing your screen. Like your screen is not visible. ओके ओके राइट सो आई बिलीव नाउ यू एबल टू सी माय स्क्रीन Mm-hmm. yeah Yes. so create a column as we have discussed Done. and taking 2 minutes of time get me the bank names Oh, I'm done. okay very good check it out did you receive the bank names properly Yes, I got it. don't go very far just see third City, case yeah, what I for have city, I highlighted. didn't get city, it just got city. It's not saying that city bank. City is only city. No need to go very far. Just highlighted one. I have highlighted one. Check it out. Did you receive the bank name properly for that? Yeah, the Bank of Nova, not even Scotia is there, right? Yes. So what is happening? What's your belief system says? Flash is working? Yes or no? To some extent, it's working. Not we cannot say it's working 100%. So can I say to my boss, sir, we have extracted partially some data, but it's something yet to be received. Can I say something like that to my boss? No, no, What he'll say? He will listen and he'll say, काम हुआ कि नहीं हुआ मुझे ये मत बताओ कि 75% हुआ 50% निकला 20% निकला मुझे चाहिए बैंक का पूरा नाम निकला या नहीं बस ऐसे ही पूछते हैं है कि नहीं right. राइट तो यहाँ पे आंसर हमको मिला कि यहाँ पे फ्लैश फिल काम कर रहा है बट जो आउटपुट है वो हमारे हिसाब से नहीं आ रहा है तो बेसिकली बॉटम लाइन है फ्लैश फिल फेल हो रहा है कि नहीं ऑल ऑफ यू एग्री Right. यस Yes. तो चलिए ये फिर कैसे हुआ या अभी तक तो फ्लैश फिल बढ़िया से काम कर रहा था फिर यहाँ पे क्यों काम नहीं कर रहा है क्योंकि फ्लैश फिल को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का लॉजिक वो अपनाए भले ही ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है लेकिन डेटा के हिसाब से वो अपना इंटेलिजेंस बनाता है तो यहाँ पे उसको क्या लगता है पहले देखो समझो कहीं पे 3 स्पेस हैं कहीं पे 4 स्पेस हैं बैंक का नाम देखो कहीं पे 2 स्पेस हैं तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या पैटर्न वो बनाए तो इसलिए उसको जो पैटर्न लगा उसी के हिसाब से बनाया लेकिन वो पैटर्न हमारे कोई काम का नहीं है तो बेसिकली दिस इज आउट ऑफ द 10% केस व्हाट आई वाज सेइंग यू दैट 90% cases it will work like a charm so this is about the rest of 10% cases when your data is not having a proper pattern flash fill is going to fail so in that case, how to get our data, how to extract our data? तो वहां पे हमको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला और फंक्शन ड्रिवन रिजल्ट्स तो कौन सा ऐसा फंक्शन जो हमको यहाँ पे मदद करेगा लेट्स गो फॉर दैट ओवर हियर so here I'll take you through no need to have some extraordinary thought process over here I'll tell you very simple way देखो as a layman पहले समझो मेरे स्क्रीन के ऊपर हमारा जो डेटा है यहाँ पे दिस इज आवर एंटायर डेटा सेट डू यू एग्री Mm-hmm. नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज द बैंक नेम अगर मुझे बैंक नेम दिखाना है देन थिंक इन द अदर वे
From this entire data set, if I remove my unwanted data, so this is my unwanted data. Mhm. तो पूरा सेल में से अनवांटेड डेटा अगर मैं निकाल दूंगा, बाकी जो बचेगा, इज इट द बैंक नेम? Yes. So that is Yes. what we are going to do. So देखो, अभी अनवांटेड डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है? बैंक अकाउंट नंबर से. डू यू एग्री? Yes. So After the bank, bank account number is the starting point of my unwanted data. So I need to find out where it is located. What is the position of our bank account number? We need to first identify. तो उसको identify करने के लिए Excel में एक बढ़िया सा फॉर्मूला है जिसका नाम है find. पहले देखो, समझो पहले. So it is demanding find text. क्या आप find करना चाहते हो? Bank account number. तो bank account number right में already है, ले लिया. फिर ये पूछा कि कहाँ पे देखना चाहते हो? विद इन टेक्स्ट, इन द लेफ्ट. तो Mhm. इमीडिएटली जब मैंने एंटर किया, इट गिव्स मी अ नंबर. व्हाट इज दिस नंबर सिग्निफाइंग? 27. कि अगर हम कैरेक्टर काउंट करेंगे, ए एज 1, यू एज 2, अगर ऐसा सब काउंट करेंगे, तो यहाँ पे 27th पोजिशन पे हमारा बैंक अकाउंट नंबर शुरू हो रहा है. दिस इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग. होप दिस इज क्लियर. Mhm. लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको डेटा चाहिए. तो फाइंड से पहले हम जाके एक फॉर्मूला लगाएंगे लेफ्ट. जैसे एक राइट फॉर्मूला है एक्सेल में, टू एक्सट्रैक्ट सर्टेन कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट, वी हैव आल्सो ए फॉर्मूला फॉर लेफ्ट टू एक्सट्रैक्ट सर्टेन कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट. सो व्हाट इट डिमांड्स मी? टेक्स्ट. कि डेटा कहाँ पे है? डेटा यहाँ पे है, मैंने दे दिया. फिर ये पूछा कितने कैरेक्टर्स लेफ्ट साइड से चाहिए. तो फाइंड फॉर्मूला ऑलरेडी मुझे दे रहा है 27, लेकिन 27th वाला जो कैरेक्टर है, दिस इज द फर्स्ट बैंक अकाउंट नंबर्स कैरेक्टर. सो आई डोंट वांट दैट, आई जस्ट वांट one character less than that. Now bracket close, formula is ready. आ गया. बाकी को अप्लाई करना है. डबल क्लिक ऑन द fill handle and immediately you can notice exactly wherever the bank name is there, it has been fetched over here. So this is how people, whenever there is a need, you may use this kind of formula driven answers to extract your results over there. Go with the same rhythm. First go for find formula, then use left. Once I get 27, that Mhm. first step I Yeah, got it. Again, yeah, I need to edit. I need to type the formula again after that only. yeah. That is what. See, first we have understood what find formula does. Now find formula we have to retain in left formula. So before find, you have to start working left formula. Left. Find D4 again.
Yes, I'm able to do. Okay. So this is how you have to keep practicing about all this stuff, people. And whenever you feel that Flash Fill is not working for you, you can always take a chance by using this kind of formulas. All right. So this is the story of our data clean 3. Now, let's go to the sheet name called data fill. Can you just hold on? I'm just writing Yep, this. Just yep. a 1 minute. Also, can you give some tips, like whenever like we try to write down some formula, Mhm. like what should be added to that? Like it will eventually the formula will go, and then it will just give me a saying name and then question mark. It will give me that error. See, the moment you're writing any formula, I told you always read the instructions. Like, see, the moment we go for this find formula, what did I say? What it demands? Find text. So Fine. what you are looking for. So this is how one by one element you have to read and you have to give that. That will be very easiest way to deal with your formula. Now you have to apply logic. Now, if you do not have a direct text, like Mhm. ready-made you do not have, if you want to bring by using some other formula, then you can bring it also. Like you can use right over here. Now I want 8 characters from the right side. So here I can go for this comma 8. So I can bring it something like this. So find text, it's not be necessary that I should have some ready-made data. If I want to fetch by using some formula, I can use the right formula or left formula, anything, I can bring it. Okay. So this is how you have to understand first the formulas, then you have to apply your logic. And that comes out of your practice and experience. Overnight, it's not possible. Hmm. Okay. Yeah. Now let's go for our next sheet, people, naming called data fill. So here, let me take you through the data set. We have got two data set of similar type. So we'll focus with the first one first. Okay. Take a look. Suppose my boss asked me, Pravas, get me the entire revenue report. So what I did, I gave a respective T code in my SAP system and I could generate near about 10,000 records comes in this format, like city wise. These are the products we are selling in our outlet and this much of revenue we have made. Complete report. Now, when I presented the same to my boss, he's not happy with that. He is saying, Pravas, this data is of no use for me. You keep it with you. I just want to see the records with regard to Chinese sources. I repeat, we have got 10,000 records. Boss wants to see only Chinese sources related records. तो हम क्या करते हैं वहां पे? Apply filter in product Simple, description. right? So we'll go to product description and we apply filter, and going to filter, we go for select all to deselect, and then we go for Chinese sources. जहाँ पे है उसको select करते हैं, OK करते हैं. Data आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं. This is how we do. All of you agree? Yes, but it Right. won't come store detail wise. That's a different story. Hmm. So this is how we do the application of filter and we extract our data, we showcase our data. ठीक है? तो अगर हम ऐसा करते हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं, बहुत सही है. But this is not acceptable for a professional like us. क्यों? कोई अगर एक्सेल पहली बार सीख रहा है, जैसे कि एक स्टैंडर्ड 5 स्टूडेंट, क्योंकि आजकल स्कूल में भी एमएस ऑफिस आ गया है, तो वहां पे अगर कोई 5वीं कक्षा का बच्चा अगर सीख रहा है पहली बार, वो अगर ऐसा कर रहा है, ठीक है. बट हमारे जैसा प्रोफेशनल जो कि एक्सेल में बहुत दिनों से काम कर रहा है, इंडस्ट्री में बहुत दिनों से, कॉर्पोरेट का बहुत एक्सपीरियंस है, अगर हम भी ऐसा करेंगे ना, देन दिस इज नॉट अलाउड. द अमाउंट ऑफ टाइम व्हाट यू स्पेंड फॉर फिल्टरिंग दैट एक्शन इज नॉट अलाउड. तो चलिए,
फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाउ टू मेक ए क्विक फिल्टर, लेट्स डिस्कस। देखो मेरे स्क्रीन में एक मिनट पहले देखो ध्यान से। I will take my mouse, I'll go to Chinese sources, right click on that, filter, selected by cell value। देखो काम कितना आसान हो गया। सेम फिल्टर बटन एक्टिवेट हुए, चाइनीज सोर्सेस रिकॉर्ड्स भी दिखने को मिला, बट मुझे ये सिलेक्ट ऑल डीसिलेक्ट कल का कोई चक्कर यहाँ पे नहीं आया है। देखा काम कितना आसान। गिव इट ट्राई। गोइंग टू चाइनीज सोर्सेस, राइट क्लिक, फिल्टर, सिलेक्टेड बाय सेल वैल्यू। तो कभी कभी माउस में भी काम जल्दी होता है, बट मेजोरिटी केसेस क्या होता है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में काम जल्दी होता है। तो चलिए, हाउ टू मेक ए क्विक फिल्टर, थोड़ा बहुत हमको ज्ञान मिला। भले ही ये हमारे पास है, राइट क्लिक हम कितनी बार करते हैं, दिन में 100 बार करते हैं, लेकिन कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया हमने। यू ऑल एग्री? Mhm. इज इट वर्किंग? Yes. Yes, it's working. Yes. तो चलिए, चाइनीज सॉसेस रिलेटेड रिकॉर्ड्स तो मिल गया, लेकिन बॉस खुश नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये चाइनीज सॉसेस कौन से यूनिट का है, कौन से आउटलेट का है, कौन से सिटी का है, वो डिटेल्स यहाँ पे मिसिंग है, राइट? तो क्या यहाँ पे मैं अपने बॉस को कह सकता हूँ कि सर, आप एक साथ सब कुछ क्यों नहीं डिमांड करते हो? पहले बोलते हो कि चाइनीज सॉसेस रिकॉर्ड्स दिखाओ, जब ला के दिखाए तो आप बोलते हो कि स्टोर डिटेल मिसिंग है। क्या मैं ऐसे बॉस को रिटर्न सवाल कर सकता हूँ या बता सकता हूँ? No. No. बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या समझ में आया? देखो, कॉर्पोरेट में दोस्तों, डिमांड विल बी ऑलवेज लेस, बट एक्सपेक्टेशन विल बी ऑलवेज हाई। तो डिमांड था चाइनीज सॉसेस रिलेटेड रिकॉर्ड्स दिखाना, लेकिन जब आप प्रेजेंट करोगे, एक्सपेक्टेशन ये भी रहेगा कि साथ ही साथ आपको स्टोर डिटेल के साथ भी दिखाना है। तो if you want to make a stand out of the crowd, or if you want to make your difference at your workplace people, you need to exceed the expectation in the corporate world। तो चलिए, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमारे साथ क्यों हो रहा है? देखो, प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि हमारे स्टोर डिटेल में ओनली पहला रो आइटम सिर्फ आपका सिटी का नाम लिखा हुआ है, बाकी सब ब्लैंक्स हैं। तो जब तक ये ब्लैंक सेल अपने सिटी के नाम के हिसाब से यहाँ पे बन नहीं जाते हैं या फिल हो नहीं जाते हैं, तब तक ये डेटा कोई काम का नहीं। ना हम फिल्टर कर सकते हैं, ना पिवट बना सकते हैं, ना सब टोटल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले डेटा को रेडी करना पड़ेगा, लेकिन करेंगे कैसे? देखो, स्टोर डिटेल कॉलम में मैंने कर्सर रखा, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड आवर एक्टिव सेल। व्हाट इज दैट? एक्टिव सेल। एंड हाउ टू नो वेर माई एक्टिव सेल इज देयर? देखो, ऊपर यहाँ पे एक नेम बॉक्स लगा हुआ है, देख पा रहे हो? सो दिस इज कॉल्ड योर नेम बॉक्स और एक्टिव सेल रेफरेंस। तो कहीं पे भी कभी भी आपका कर्सर है, आपको जानना है, यहाँ पे फोकस करो, ये आपको देगा आंसर। और ये जानने की क्या जरूरत है? कल जाके जब आप मैक्रो लिखोगे या एक्सेल वीबीए में कोई कोडिंग बनाओगे, बिना डेटा को देखे आपका जो एक्टिव सेल रेफरेंसेस है, वहां से ही आप अपना कोडिंग बनाओगे। एक्टिव सेल से नीचे जाना है, एक्टिव सेल से राइट जाना है, या एक्टिव सेल से ऊपर जाना है। सो ऑल दिस मूवमेंट्स यू कैन कंट्रोल फ्रॉम द एक्टिव सेल ओनली, एंड दैट यू कैन डू विद द कोडिंग। तो इसलिए एक्टिव सेल जानना बहुत जरूरी था। चलो, अभी हमको तो पता चला। नाउ कीपिंग द कर्सर इन द एक्टिव सेल, फर्स्ट 1 मिनट वॉच माई स्क्रीन। देखो मैं क्या करता हूँ। मैं अपना यहाँ पे स्क्रॉल बार में लेके पहुंच गया और इसको नीचे ला गया। लाने के बाद देखा कि मेरा लास्ट रो आइटम भी दिख रहा है कि नहीं? But the moment you want to go for that, now what I want to do is I will keep my cursor. I will not click. I will take my cursor to that cell, but my active cell is still A3 only, right? So I'll taking my pointer to that last cell and holding the shift button, I will click it. Now whole column will be selected. So this is the best practice to select the non-contiguous cells in a whole column. Give it a try and confirm you're able to select the whole column. Yes. Prabhat ji, could you please repeat? Yep.
keeping the cursor in the store detail, Mm-hmm. then going to the scroll bar over here, bringing it down, then you can see the last row item. But the moment you want to select, holding the shift button, you have to click the last cell of that column. Then whole column would be selected. Okay. Yeah, got it. चलो, होने के बाद अभी क्या करना है, जैसे कि डेटा क्लीन 1 में हमने देखा था, विल गो फॉर आवर कंट्रोल जी बटन मिलता है स्पेशल, वी कैन क्लिक ऑन स्पेशल, then we'll go for our blanks. So when we go for blanks and click OK, from the entire data set, only blank cells alone would be selection. Okay. Now leave your mouse, leave your touchpad, immediately type equal to and take the reference of the previous cell. उसके ऊपर वाला cell जहाँ पे मुंबई लिखा है उसको click करना है and hit Control Enter and see the beauty. The entire column will be ready. Can you please repeat? Have you selected the whole column? Yes. Then just go for Control G, click Special, click Blanks, Okay. click Okay. OK. Then leave your mouse, leave your touchpad, type equal to. It will start typing in the first blank cell. Then click the above cell and hit Control Enter. Okay. Okay. All right, so once you're done, please do a practice in our case number 2, which is in the right side, and just get the store detail populated. Yes, done. Prabhas, can these two things be done together? Like now it's okay. Mhm. We're doing for practice, but is it possible to copy the two cells? Like I'll copy row A and then G and then do this thing together. No, row A, I do not get you. What is that? Like we did in a row A, like the cell Mhm. A, we first Mhm. did that Mhm. store detail, right? Like And then this? again, yeah. So I'm asking, is it possible No, to do A no, and G together? no, no. I A mean, and then A and G like this. yes. And then Yeah, I'll go you to you control. you can do, but the thing is, how will you select? See, if it is in the contiguous cell, you can do that. But when you go for the whole column, there is also some unwanted blank cells also selected. Can you see that? Yeah, that upper one, two, right? Yes. Similarly, if you see bottom, it is applied for the entire 10,48,576 rows.
Yeah, it's going till down. So it's right. Yes. So that's not the right way to do it. Okay, okay. Yeah, but I could answer your question in a better way. Just watch my screen. I could Hmm. understand your pain, whatever you are asking me. Let me put it in a proper format. See, sometimes what it happens, I'll take you through. Yeah, assignments. See, you might be having the data something like this. Yes, Our exactly. supply number, supply name will be like this. So I have to apply this format again for this both these columns, right? So what I can do, I can select this. I'll go and scroll down and I could see my last row item. So taking this data over here cursor, holding the shift button, I can select like this. That's possible. Okay, when two are मतलब Yes, दो in the columns के consecutive. पास में Yeah, है तो yes, okay, okay, yes. got it. All right, so can I take that everyone is able to do the same thing for column G? Yes, I am. Yes. Yes. Now, we are done with our data fill people. Okay, let's go for the next. The sheet name is called sorting. Okay. So again, we have got two similar data sets. So we'll go for data set one to discuss with. Now take a look. Suppose मान लो बॉस ने मुझे पूछा कि प्रभास get me the entire employee related records. तो मैंने अपने SAP में टी कोड डाला और कुछ डेटा ऐसे बना के लेके डाउनलोड किया. Around 10,000 people's data coming across over here in this format. Like we have got department name, employee name, date of joining, and the salary. Okay. Mhm. So when I presented this, my boss is not happy. क्या कहा उन्होंने कि प्रभास ये डेटा कोई काम का नहीं है. It's not seems to be in a good shape or good information. So do one thing. Please arrange the data based on the department. So why he is so particular about department? बहुत सारे कॉलम्स तो है ही. तो चलो देखते हैं. सो डिपार्टमेंट कॉलम में अगर आप देखोगे पहला डिपार्टमेंट कौन सा है? Finance, सेकंड, administration, थर्ड, then human resource, again and finance. so data is suffered, data is jumbled. That's why it is not in a good shape. Boss is not happy and he's expecting I should gather the data group wise one place, Mhm. right? So for this, we have to arrange our data. And for arranging the data, we have a beautiful data arranging tool called sorting. Mhm. लेकिन sorting क्या करता है? पहले डेटा को समझता है किस तरह का डेटा है. If it is alphabet, A to Z, नहीं तो Z to A. If it is a number, smallest to largest, नहीं तो largest to smallest. If it is a date, oldest to newest, नहीं तो newest to oldest के हिसाब से order बना के उसको arrange करता है, right? Mhm. लेकिन ये sorting मिलता कहाँ पे है? देखो, there are three different locations you will find sorting. One, home में जाके हम filter sort and कर सकते हैं custom sort. Mhm. डेटा में जाके हम यहाँ पे sorting कर सकते हैं रेडीमेड. नहीं तो राइट क्लिक करके यहाँ पे sorting भी कर सकते हैं. ठीक है. So these are the various options we have. So whichever it is convenient for you, you can go for it. But if you ask me, I believe in working with keyboard shortcut. तो keyboard shortcut क्या है? Alt D S, data sorting. Sorry. ठीक है. तो चलिए. Keeping the cursor anywhere in the data, Control A,
and go for Alt D S one by one. Able to do your sorting dialog box getting over there on the screen? Alt DS. Yeah, I got it. Yeah. Snehal and Ravindra? Yes. Sure. Snehal? Okay. तो सॉर्टिंग हमने देखा, सॉर्ट बाय, बॉस को क्या चाहिए, डिपार्टमेंट के हिसाब से, डिपार्टमेंट में अल्फाबेट से तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली ए टू जी या जी टू है, वो उसने किया, तो ए टू जी रखते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लिक ओके। नाउ यू कुड नोटिस each and every department wise data group together, Mhm. right? Are we getting the same? Yes. Right. Yes. Yes. Now once we get it, my boss is still not happy. क्यों? For me, the Maybe the sorting expectation is is not that take. the employee name should be in alphabetic, or the date of joining should be in ascending or descending order. सोचो, अगर आप ऑडियंस की जगह पे हो, So आप it's क्यों not. खुश नहीं होंगे? Yeah, because it's not in table format. Like it's not presentable, like which we learned in previous Okay, in data that's it. presentation. Yes, that's a good one. I appreciate that. देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैंने डिपार्टमेंट के हिसाब से डेटा बना के दिया जो बॉस को चाहिए था, फिर भी वो देख के खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं है? क्योंकि डिपार्टमेंट के बाद अगर मुझे फोकस करना है तो मेरा फोकस कौन से कॉलम पे जाएगा? Salary. जहां पे पैसे की बात आती है। फाइनेंस टर्म्स मेक्स अ लॉट ऑफ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, है कि नहीं? Mhm. तो एम्प्लॉय नाम में कोई देखना दिलचस्पी नहीं रखता है, ना डेट ऑफ ज्वाइनिंग कोई इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। तो इसलिए बॉस ने देखा और उन्होंने पूछा कि प्रभास, आई कुड सी द डिपार्टमेंट वाइज डेटा यू हैव डॉटेड, वेल एंड गुड, but what I am expecting is in each and every department the highest salary should be there in the top, the lowest one should be there in the bottom. This is what boss is expecting. Mhm. तो यहाँ पे वो मिसिंग है। So this is called multi-layer sorting or multi-level sorting. So how to do a multi-layer sorting? Let's discuss. Keeping your cursor anywhere, go for Control A. Okay. Then go for Alt D S. You could see already department wise, already one layer is created. We should not touch that. We should not change or alter or tamper this. There is one more option over here in the top left corner, naming called Add Label. तो जब हम ऐड लेवल पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे और एक ब्लैंक लेयर भी आता है, राइट? सो वहां पे जाओ, ड्रॉप डाउन क्लिक करो, बॉस को कौन सा कॉलम पे भी फोकस करना है? Salary. Salary. सैलरी। तो सैलरी किस तरह का डेटा को डील कर रहा है? नंबर्स। नंबर्स है तो क्या ऑर्डर मिला? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। बॉस को कौन सा चाहिए? Largest to smallest. Largest to smallest. Now click OK and you can notice each and every department wise highest salary in the top and the lowest one, is it appearing at the bottom? Yes. So this is how people you can apply up to 30 multiple layers, 30 layers of sorting you can do. That is the maximum limitations of Microsoft Excel sorting work. But we never go that many level, maximum 7 to 8 layers, we finish the task. But yes, we do have an option. Hope it is clear what we did. Give it a try. Yes. Prabhas, while doing this, can I just also go by doing it with Control T, like
you taught us yesterday, that data presentation, right? After I got this data and I'll do this in table. Yeah, see, as long as the moment, if I go for converting the data into tables, suppose say take an example. Now, when I go to filter, even I do get a sorting Z to A, all these things we do. And in fact, if you go for data sorting also, you do have the options. You can try this, not a problem. Mhm. So now I'll go for department-wise sorting. I can go and click OK, department was already there. Now, if I want to go for date of joining was sorting, so I can go for simply department date of joining. Now I have got oldest to newest, but now I would like to go for now instead of date of joining, department wise. Along with that, I want to go for salary wise. So I can go for salary wise, largest to smallest. I can do that. That's not a problem. Okay. Hope it is clear. जो हमने किया अभी तक. Yes. Right. Now my boss is happy, but my audience is not happy. क्यों? सब कुछ तो हमने किया. बॉस को जो चाहिए था हमने दिया, बट बॉस खुश है, ऑडियंस खुश नहीं है. क्यों? प्रेजेंटेबल नहीं है. ठीक है, प्रेजेंटेबल नहीं है. तो जैसे कि हम कल सीखे, इसको हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा ब्यूटीफाई हो जाएगा और लोगों को अच्छा भी लगेगा. बहुत बढ़िया. और कुछ? डेटा ग्रुपिंग नहीं है, आई मीन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी कितना है, एडमिनिस्ट्रेशन का हाँ, कितना है, तो परसेंटेज कितना है. राइट, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी अगर हम दे सकते हैं बकेट बना के, तो दैट विल बी मोर इम्प्रेसिव, पीपल विल बी मोर हैप्पी. ये मिसिंग है. बहुत बढ़िया. और कुछ? परसेंटेज वाइज टोटल हर डिपार्टमेंट का कितना परसेंटेज है आउट हाँ, ऑफ वो मेरे भी हम कर टोटल सकते थे. सैलरी. बहुत बढ़िया. और कुछ? To make out which department is having how much percentage, as you said, that percentage. तो That's what, nothing but same thing as a replication. चलो ठीक है, ये सब चीजें हमको देना चाहिए था और लोगों को ये सब चीजें पसंद भी आती है, जो कि हमने नहीं किया, जिसके वजह से लोगों को हमारा रिपोर्ट पसंद नहीं आया. इतना पता चल गया, राइट? हाँ. इसके साथ साथ और एक चीज भी देखो. आपने यहाँ पे जो सीखा, हमारे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग है. To make a value additions to our data, don't you think that we could add a column called experience of the employee यस. Okay. and taking the formula, naming Today. called date diff, not today, date diff, date of joining, comma, end Today. date, today formula, and in terms of years, we could give this reference. What say? तो आगे 21, बाकी को अप्लाई करना है तो और एक कॉलम भी बन जाता एज ए इंफॉर्मेशन. Give it a try. Nothing new. This is what we learned yesterday. Yes, able to do it. So this is our people. We have understood that do not confine your limit just to the demand or ask. Always try to give more to the add-on to the data and giving more information so that your report will be different from others and you can make a difference at your workplace. ठीक है? ये एक चीज हमको पता चला. तो चलिए, यहाँ पे लोग खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि हमने जो सॉर्टिंग का काम किया, that is anybody's job. Anybody could do it. That's why people are not happy, because we did not give any kind of add-on or we did not have any kind of creativity or innovative ideas over here.
that our report will be different from others and people would be happy, right? तो चलिए अभी वही चीज करेंगे, जो भी लोगों को चाहिए वो सब हम देंगे, लेकिन हमारा काम करने का तरीका अलग होगा, हमारा प्रेजेंटेशन करने का डेटा का तरीका अलग होगा। कैसे? सो हाउ टू ब्रिंग द लेटेस्ट स्टाइल ऑफ आवर डेटा प्रेजेंटेशन इन आवर डेटा सेट एंड हैविंग इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो चलो अपने राइट साइड में जो डेटा सेट है उसमें कर्सर रखो, डेटा को सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए, and go for over here first data sorting, not by department, go for by salary. Okay, smallest to largest, or like which one? Sorting. Now instead of that, largest to smallest. Then click OK. So you can see the first salary is turning up like 49,942. Kindly confirm. Yes, Yes. market. चलो होने के बाद अभी यहाँ पे नेक्स्ट टाइम क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करो, जैसे कि हमने सीखा we can convert our data into table to make it more beautiful. What is the shortcut? Control T. Very good. Go for it. Click OK. Now, once your data is applied with table format, as you know, we have got table design, or design will be activated. Then, in this table design, can you see we have an option called filter button, checkbox is on. Yes. Deactivate that. Done. Then it will be seeming as if a normal data we have over here. Yes. Then above to the date of joining over here, you can keep your cursor and name it as total. Name it as total. And next to the total cell, you can keep your cursor and type a formula naming called subtotal. A very beautiful formula we have in Excel, naming called subtotal. This is a very powerful formula, people, but bit peculiar also. Why it is peculiar? Because in subtotal itself, many more formulas there. So we need to go to the formula name called sum. Can you see a number is assigned to the left? It's called 9. You can type 9 manually, or you can double click on some formula. So 9 will be immediately embedded in our subtotal formula. Now comma. So हमने डिक्लेयर किया कि हमको सम करना है, लेकिन किसके ऊपर सम अप्लाई करना है? So select starting from your first salary till the last one and hit enter. It will be giving you a total of 29,11,878. Kindly confirm. Yes. Yes. Now the same we are going to convert into a currency. So any format, if you want to apply currency format, Control Shift 4. Control Shift 4 to convert any format to currency. Go for it. And whatever your default currency of your system, say US dollar or INR, will be applied. It's taking INR. Yeah. So it depends what is the default currency of your system. Based on that, it will be applied. So यहाँ तक clear सबका? Yes. Snehal? Yes. Now, once we have done with this, keep your cursor above to the total cell and then go to insert. There is a beautiful option in the illustrations tab naming called shapes. So we can take a shape like our rectangle shape. Okay. In this rectangle shape, you have to select and just draw this rectangle box in this format. For me, it would be coming for 2016 Yes, itself. yes, you have the direct option called shapes. Insert shapes, you will be having a direct options. You don't need to go for Okay. illustration group.
Yeah, I got it. Mhm. Yeah. Yes, done. Hmm. Now, once you have this, you can notice a shape format will be activated in the top, or format depending upon the version of Microsoft Excel. Mhm. And there we have got different shape styles. You can see there is just different styles we have. This is called more button. You have to click. And once you click that more button, it will take you through some ready-made styles like this. And whichever the colors like you most, you can take that style. Suppose I like this color I have applied. Okay. Now, selecting that shape, go to your formula bar and type equal to and refer to that currency, whatever we have converted value, and hit enter. Now that value will be populated in your shape. Hmm. Now go back to your total cell, that is 29 lakhs, and remove the decimals. Going to home, decrease decimals. You can remove the decimals. And to make it more visible, select the shape and increase the font size by hitting Control, Shift, and greater than symbol. Control, Shift, and greater than symbol. Keep hitting, and that will help you to increase your font size. This will be applicable for your MS Word, MS Outlook, MS PowerPoint as well to increase the font size. But in Excel, only if you are there in shapes or charts or graphs, this is going to be applied. What's that again? Can you tell? Control. Control, Shift, and greater than symbol. Oh. Mhm. Yes, able to do. Now, once we have done with this, to make it center, go for Control E. So Control E is the keyboard shortcut, will be applied for center. But if you go for direct Excel, it will be working like a flash fill. Now, since we are having high definition background color, the font color should be high contrast to the background. For that, go to the shape format and use text color as white. Okay. So all these necessary formattings, once it is over, you can hold this shape and drag it and put it below and cover those calculations, whatever we have made. So I am combining everything. Whenever you are designing the dashboard, summary report, tabular report, how to present your data in a lucrative fashion, all this information I'm adding together. So kindly confirm after this all are clear. Yes. चलो होने के बाद अभी यहाँ पे टेबल में कहीं पे भी कर्सर रखो. You will be getting same table design activated or design options. Then insert slicer one option will be there. And when you click this insert slicer over there, it is going to take you to a dialog box जहाँ पे department वाला checkbox activate नहीं है. आप इसको activate कर सकते हैं. And the moment you click OK, you will be getting a dialog box appears like this that you hold it and drag it and put it below in this format. Okay. Now we are ready. Mhm. सपोज मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ लोगों को, किसी ने पूछा कि प्रभास मुझे एचआर का डेटा देखना है, बस गो एंड क्लिक ह्यूमन रिसोर्स. नाउ एंटायर एचआर रिपोर्ट कितना सैलरी गया है वो बॉक्स में दिख रहा है. What is the highest salary of HR? Is it appearing in the first row? What is the lowest one? Is it appearing in the last row? All Oh. these things are happening. Now, अगर किसी को admin का देखना है, click admin, all the admin records will be displayed. किसी को दोनों देखना है, admin के साथ HR देखना है, holding the control button, दोनों को select करो, दोनों का data दिखेगा. So things have become more dynamic now.
And once your presentation is over, you want to restore your data. देखो डिपार्टमेंट ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में एक फिल्टर बटन लगा हुआ है. This is called clear filter. You can click that and data will be restored. Now think about it. अगर आप ऑडियंस की जगह पे होते तो आप कौन सा देखना पसंद करते, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? The right one hand जो हमने अभी किया बनाने, कंप्लीट. right? So this is how always try to make something different people, and trust me, whomever you are presenting this, they are going to happy watch by watching your presentation. और कुछ कोई definitely आके आपको पूछेगा सब कुछ सही है लेकिन ये कैसे बनाया, because this Slice. is stealing your entire show. ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है स्लाइसर्स के बारे में, लोगों को पता है, but they have the impressions that slicer is possible only if you are working with pivots. बट हमने कहाँ पे यूज किया स्लाइसर, एक नॉर्मल डेटा के ऊपर. कैसे? बाय कन्वर्टिंग द डेटा इनटू टेबल. सो ये जो ऑप्शंस हैं टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से ही एक्टिवेट होते हैं. तो और एक एडवांटेज हमने देखा कि टेबल फॉर्मेट में एक्टिवेट करने से फायदा क्या है, Hmm. राइट? यस, स्नेहल एंड रविंद्र जी, क्लियर? Yes, yes. यस. कोई सवाल है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं. ठीक है. सो I consider everyone is clear with our sorting exercise. Now we'll go to our next naming called multi-DB filter. Mhm. ठीक है. तो मल्टी डीबी फिल्टर, यहाँ पे जो डेटा है पहले इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ आपको. मान लो हमारे पास दो, हमारी कंपनी का 2 यूनिट का डेटा है. मान लो हमारी कंपनी एक है चेन्नई में, ठीक है, और दूसरा है पुणे में, मान के चलते हैं. तो बॉस ने मुझे पूछा कि प्रभास, मुझे चेन्नई में से कर्नाटका रिलेटेड रिकॉर्ड्स निकाल के दिखाओ और पुणे से सिर्फ अप्रैल महीने का रिकॉर्ड्स दिखाओ. क्या कहा? चेन्नई से सिर्फ कर्नाटका का देखना है और पुणे से अप्रैल का देखना है. ठीक है. तो मैं चेन्नई में गया, कर्नाटका में राइट क्लिक किया, यहाँ पे फिल्टर सिलेक्टेड बाय सेल वैल्यू, तो चेन्नई का डेटा आ गया. परफेक्ट. Mhm. तो मुझे अभी करना है पुणे के डेटा के ऊपर काम. कौन से महीने का? अप्रैल. मैंने सिलेक्ट किया, राइट किया, फिल्टर सिलेक्टेड बाय सेल वैल्यू. क्या हुआ? पुणे का डेटा तो आ गया लेकिन चेन्नई का डेटा में से फिल्टर हट गया. Right. तो दिस इज व्हाट ए मेजर कंसर्न. व्हाट इज दैट वी हैव अंडरस्टूड कि अगर कोई भी एक्सेल शीट में मल्टीपल डेटा सेट्स हैं तो फिल्टर सिर्फ एक ही डेटा सेट के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि filter itself is a toggle key. First impressions to activate filter, second impressions to deactivate filter. तो जिसके चलते हुए मल्टीपल डेटा सेट एक ही वर्कशीट में हम नहीं दिखा सकते. तो जब मैंने बॉस को ऐसा कुछ बना के दिखाया और प्रेजेंट किया, बॉस ने कहा अगर पता नहीं है पहले सीख के आओ, मुझसे बात करो, डोंट टेल दैट इट्स नॉट पॉसिबल. बॉस ने कुछ ऐसा कहा. तो अभी कैसे काम करेंगे? सामने देख रहे हैं कि फिल्टर हो नहीं रहा है. तो ये जो एक प्रॉब्लम है दोस्तों, बड़ा सा प्रॉब्लम, सिंस 1985 टिल 2003 वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इट वाज अ मेजर प्रॉब्लम. इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल. But right now, we are working with the higher versions of Excel. So it's no more a problem. See the beauty. What we can do, we can go and simply play a simple trick. We can select our data, convert our data into table. And once we do this, we got our filter button ready. और Mhm. बॉस को कौन सा चाहिए? कर्नाटका. मिल गया. नाउ आई गो टू माय सेकंड डेटा सेट पुणे का. अप्रैल में मैं क्लिक करूंगा, सिलेक्टेड बाय सेल वैल्यू. देखा, दोनों डेटाबेस में फिल्टर अप्लाई हो गया. तो अगेन वन मोर एडवांटेज ऑफ कन्वर्टिंग योर डेटा इनटू टेबल. इवन इफ यू हैव मल्टीपल स्टोरीज टू एक्सप्रेस इन वन वर्कशीट, you can do that. Give it a try. Done.
So any questions from anybody? Not clear or any doubt? It's clear. All right. Now, multi-DB filter. We are done with that. We'll go to our next sheet जिसका नाम है data visualization. ठीक है? Mhm. तो अभी तक हमने देखा कल से लेके आज तक कि डेली एसेंशियल फॉर्मूला रूटीन वर्क में कैसे हेल्प करते हैं, डेटा को इंफॉर्मेशन के कैसे तब्दील करते हैं, उसके ऊपर कैसे डेटा को ब्यूटिफाई करते हैं बाय यूजिंग द टेबल फॉर्मेट, how to use the data analytical tool over there in Microsoft Excel called Bullsig, and how to clean our data over there if you download something from SAP or ERP, and how to present our data effectively with a dynamic impact by on a click of button and giving a dynamic feeling over there by using slicer, then how to use multi-database filter by converting the data into table and applying the same. तो ये सब हमने देखा. तो अभी हम जो काम करेंगे, how to present our data in the visual format, so that those people who are not having the time to see our boring numbers, or they don't have time to go through our billions, billions, lakhs, and crores, and they want to have an immediate story from our data, then how to present it effectively by exceeding their expectation, we are going to discuss. So basically, in one line, if you want to say, we are going to learn how to visualize our data and present it effectively. So when it comes to the data visualization, what is the first thing it comes to our mind? डेटा को अगर विजुअलाइज करना है तो हमारे दिमाग में पहला काम क्या आता है? चार्ट्स एंड ग्राफ्स का, Yes. राइट? बट यहाँ पे हम चार्ट्स एंड ग्राफ्स यूज नहीं करेंगे. That is what I would like to make it clear. One thing, we are going to use some visual tools, and that will be giving an add-on to the data, and people will love to see that. How? Mhm. Let's see. So keep your cursor, just see, we have got product-wise US dollar data. Okay. Yes. Then go to the next column, and there you type visual and expand the column a bit. Mhm. Now select your visual column Okay. and type equal to, taking the reference from the left, and hit Control Enter. So when you hit Control Enter, you could find the exact value of USD column is being populated in the visual column. Yes. Now you can ask me a question, Prabhas, you could have done the simple copy paste. Why did you take a long route like this? The reason is, tomorrow when my data is changing, USD column, I don't need to go and again repeat the process of copy paste. Since it is formula driven, automatically this will be getting updated. So got the reason Prabhas, why I can did that? you do one more time? Like I just got lost. Like after doing, I typed visual and then I selected the entire row. Then But then equal to, how you're going to that seven row? I am you not don't need able to to. go, you don't need to go, you just type equal to, it will always type in the first cell only. Mine is going in visual. Okay, are you copying after? I mean to say, are you selecting after visual, like from seven? Yes, Okay, okay, yes. I was getting visual. Okay, after that, Then take the value from the left and hit Control Enter. okay, he's got it. Thank you. Now, once we have done with this, selecting the entire visual column data, go to the Home tab, Conditional Formatting. We have a beautiful option called Data Bars. So when you go to the data bars over here, we have got two options like gradient fill and solid fill.
And there you can take any style which you like the most, but I prefer to go for this gradient fill light blue data bar I like. But it is up to you, whichever the color you like the most, you can take it. Now this is somewhat looking great. Can you see? Mhm. So what kind of feeling you are getting the moment I have applied this kind of visuals? What is that? It is available in our home tab, conditional formatting, and then within that data bars, right? So when you look at the data, what kind of feeling you are getting? It's looking good. Yeah, Something next level. As a Excel language, what you can see, what you can express in that. What do you believe? More or less, is it looking like somewhat a bar gram or bar diagram? Yes. So now, though it is looking like a bar chart, people, but how it is different from a bar chart? Let's have some basic understanding. See, if you really create a bar chart out of this data, the data will be in one location and bar chart in another location. But here, bars are exclusively applied on the cells. Advantage number one. If you really create a bar chart out of this data, the chart will be occupying a lot of space. But here, this is going to hardly occupy some space in KBs. This is what the beauty. Now, though we have presented in this format, people, that is what anybody's job. Anybody can do that. What do you say? Mhm. It's a simple jobs. Data को select किया, home में गए, conditional formatting, data bars. कोई भी apply कर सकता है. So now the time has come how to make our job different from others or our presentation different from others. Just see. Select your visual area. Mhm. Yes, after that. Then, any point of time, if you happen to see the backstage view of the conditional formatting, you should go to the Home tab, Conditional Formatting option we have got called Manage Rules. And when you go to that Manage Rules option, it will take you to a dialog box where you could see Edit Rule 1 option will be there. Mhm. And when you click that Edit Rule option, you will be finding this is the backstage view of your conditional formatting. Now, if you want to change the color, if you want to change the outline, if you want to change the direction, anything you want, you can customize from this place. But there is a beautiful option I would like to take you through, naming called Show Bar Only. One checkbox is there. Can you see? Hmm. Yes. That you need to activate. And once you activate the same, click OK. And again, click OK. Can you see now the beauty? One column having only the numbers. So those who are interested, they can see my numbers. Those who are not having time to go through and understand the things, they can simply work on the visual part. So one data set entirely, it is presenting all the information and people would love to see that. Mine didn't go like मेरा वो वही वैसा ही नंबर है अभी भी. Hmm, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा. You can share your screen. Wait, I'll try my own just a minute. Mhm. Oh, first, conditional manage rules and edit rule. After that, okay, only show bar. That Yeah. didn't get clicked. Okay, now it gone. Now it's there. Snehal, are you with us? Yes, I'm here. Okay. तो चलो यहाँ तक हो गया. अभी एक मिनट मेरे स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखो. ये सब हमने कहाँ पे किया? एक्सेल में किया. तो लोग कहाँ पे डिमांड करते हैं? पावर पॉइंट में. PowerPoint तो में. यहाँ से कॉपी करना है, पावर पॉइंट में जाना है. ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना है. देखो कैसे. एंड सिंपली जाके क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके वी कैन गो फॉर इमेज. And once we have the image in place, that we can just align over here from the diagonal section, and then I can put it across over here. And when I'm presenting it, people will love to see that with this kind of presentation. And how I'm going to steal the show with this. So this is called more or less
like a infographic presentation, which is hot cake in the market nowadays. And you will be finding the same mostly in all the big fours presentations like UI, PwC, KPMG, Deloitte, or if you see the Bain and Company presentations, McKinsey and Co, the Boston Consulting Group, you will be finding always their presentations filled with all this kind of visuals, icons, symbols, shapes. They don't use any kind of text or boring numbers there. Mhm. Okay, How looks you good. did it? Like you went to Microsoft and then? Yeah, you want to go to PowerPoint first, then Uh-huh. you go into PowerPoint, simple right click and paste as an image. This does an image. Okay, there's one. Okay. Yes, got it. Right. Now, once we have done with this, Mhm. no doubt, data is looking great and our space is also not being so heavy of Excel file. लेकिन एक चीज जो मैं कल से आपको बताया भी था कि आजकल जो ऑडियंस है उनके एक्सपेक्टेशन थोड़ा हाई लेवल पे रहता है. So when you present your data as it is, nobody likes it. So what they're expecting that you should present your data in such a way, it should tell a beautiful story to the people. So how to present our data in a storytelling format? We are going to explore that. Just see, I will select this data product in USD first, dekh lo, and I'll go to sort by USD, smallest, largest to smallest. And now the moment I'm going to present it, this is the data I have presented. So immediately it is expressing the story. From category 12, we got the maximum revenue. From category 4, we got the least revenue. Easy to understand. Yes. Now the same when I would like to present the data in my Microsoft PowerPoint over here. And when I'm presenting it, you can notice which one's looking better. Just I'll tell you. When I'm presenting it, which one you prefer to see? Option 1 or option 2? Two. Definitely anybody's choice. So small things makes a huge impact, people. And presentation is something, it's an art. How do you are presenting? And that comes out of your practice and experience. And that makes you different from others. Okay? Give it a try What and check all sorting these you things did? are Like working. all after all DS, what kind of sorting you did? From largest to smallest. From USD column, you have to do largest to smallest. You're taking in product or okay, you're taking currency wise. Largest to small. Got it. Done. Prabhas, just out of curiosity, I just want to Mhm. ask you one question. Mhm. Like how useful Chat GPT is here in Excel, or like I have not seen in any organization. Any means it's a new tool. So by any means, are we going to get that in organization level, or it's going to be an external tool only? I will tell you. First of all, And Prabhas, ChatGPT. just sorry to interrupt. And in addition to that question, one point is that when we talk about advanced Excel, people used to say why it's required. Now ChatGPT is there. You can get everything from ChatGPT. Okay, then tell them, make the everyman out and just launch ChatGPT to do the work. If that is the case, it is going to replace all the human being from the office environment. Then why people are paying hefty amount as a salary? They can launch high volume of ChatGPT in each and every department and let them do the job. Is it possible? No way. See, that is what the concept, the mindset people have to change. ChatGPT is a tool which will be giving you a helping hand just to understand what to be done. Suppose you have no idea looking at the data.
how to prepare a report. You don't have any knowledge how to prepare a report. If you have a theme, you don't have any idea how to prepare a PowerPoint presentation. What should be in my first slide? What should be in my second slide? Don't have any idea of the designing the flow. Then you can take the help of ChatGPT. Your ChatGPT cannot replace your whole system. Okay, that is what the concept people have to change. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखो एक नया चीज आ गया, लोग यूज करने लगे, बोलते हैं अरे चार्ट जीपीटी बहुत बढ़िया है, तो हमको भी क्यूरियोसिटी आती है चार्ट जीपीटी अगर क्या काम करता है। कभी आपने किसी को पूछा है जो आपको बोल रहे हैं कि चार्ट जीपीटी यूज करने से मेरा काम हो जा रहा है, तो उनको जब पूछो कि आपने चार्ट जीपीटी कैसे यूज किया। Mm-hmm. सो टेक्निकली चार्ट जीपीटी इज नॉट इवन एक्सेप्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऑफिशियली उसको अलाउ नहीं किया क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एआई सिस्टम आ रहा है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट को पायलट, जो कि अभी बीटा स्टेट में है, ट्रायल एंड एरर चालू है और उसके ऊपर बहुत सारे काम चालू है। बाय मैक्सिमम दिसंबर और जनवरी इट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन द मार्केट एंड एवरीवन एज ए कॉमन यूजर इफ यू आर यूजिंग ऑफिस 365 यू विल बी Mm-hmm. हैविंग माइक्रोसॉफ्ट को पायलट इन प्लेस। लेकिन अभी फिलहाल जो लोग बोल रहे हैं कि मैंने चार्ट जीपीटी यूज किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, पावर पॉइंट में, आउटलुक में, up to what extent you have used, what exactly you have done the difference, ask them. और See, मेरा और एक क्वेश्चन है कि is it even allowed in organizations like जैसे कि we have so many restricted sites, we are not it allowed is to it go is it is up to your outside. organization. It is up to your organization. If they are allowing you, the IT policy it is allowing you, then you can use it. So it's Mhm. not, there is no hard and fast rule for that. But I'll tell you, since you have asked me, just watch my screen. Okay. देखो, चार्ट जीपीटी दो तरह के आते हैं। एक है माइक्रोसॉफ्ट 365 में एक एडिंस बोल के ऑप्शन है, ठीक है। ये एडिंस में जब मैं जाता हूँ, यहाँ पे चार्ट जीपीटी फॉर एक्सेल वर्ड एंड चार्ट जीपीटी फॉर एक्सेल एवरीथिंग इज देयर एज ए सेपरेट एड-इन। लेकिन Mhm. ये एड-इन की वजह से क्या होता है, सिस्टम स्लो हो जाता है। तो इसलिए Okay. 90% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दे डू नॉट give the access to install any kind of add-in to the user, Mhm. ठीक है। Now, if your organization doesn't permit to use this kind of chat GPT add-in in inbuilt in Excel, then what you can do, you can go for a open AI program. Okay, तो चार्ट जीपीटी ओपन सोर्स में मिलता है, जिसको आप जाना है chat.openai.com और चार्ट जीपीटी में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। So there are two versions. One is ChatGPT 3.5, okay, जो कि आपको फ्री वर्जन मिलेगा। अगर आपको पैसा भर के ChatGPT 4 वर्जन लेना है तो ले सकते हैं, अगर आपको पूरा उसका जो एलिमेंट्स है एक्सेस करना है, पूरा पोटेंशियल अगर एक्सप्लोर करना है। तो ये है ChatGPT का ओपन एआई प्रोग्राम, ए ऑफिशियल साइट वेयर यू कैन डाउनलोड ChatGPT एज ए फ्री सोर्स। अभी इसको इस्तेमाल कैसे करना है, चलो देखो। मान लो मुझे एक पावर पॉइंट बनानी है अबाउट व्हाट, अबाउट द कॉर्पोरेट सेफ्टी। मेरा थीम है कि कॉर्पोरेट में काम करते हुए सेफ्टी मेजर्स कैसे लेने हैं, उसके ऊपर मुझे एक पीपीटी बनानी है। तो आई कैन आस्क चार्ट जीपीटी, दिस इज कॉल्ड चार्ट जीपीटी प्रॉम्प्ट वेयर वी शुड आस्क, बट यू शुड आस्क योर क्वेश्चंस वेरी प्रिसाइजली। जैसे कि नॉर्मल दो आदमी बात करते हैं, हम और आप जैसे बात करते हैं, उस तरह का बात आपको क्वेश्चन में भी डालना पड़ेगा। लाइक डिजाइन, आई गो फॉर, देखो, design a PowerPoint of corporate safety measures, ठीक है। तो इमीडिएटली चार्ट जीपीटी क्या करेगा, देखो कि कैसे आपको पीपीटी बनाना है, कौन से स्लाइड में क्या रखना है, कंटेंट फ्लो कैसा होना चाहिए, एंड हाउ मेनी स्लाइड्स यू कैन टेक इट, एंड फाइनली यू शुड हैव ए Q&A स्लाइड आल्सो इनवाइटिंग ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द पीपल। तो ये आपको पूरा स्केच बना के दे दिया। यू डोंट नीड टू टेक द हेल्प ऑफ एनी अदर पर्संस। कैन यू सी दैट? Mhm. स्लाइड 1 में क्या होना चाहिए, योर कंपनी लोगो, सबटाइटल इंश्योरिंग ए सेफ्टी वर्क एनवायरनमेंट, टाइटल कॉर्पोरेट सेफ्टी मेजर्स। लेकिन यही चीज अगर आप गूगल में पूछोगे
तो गूगल क्या देता है, डिफरेंस देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे गया, कॉपी किया, गूगल में गया, ठीक है, वही चीज मैंने पूछा। तो यहाँ पे जब मैं पूछता हूँ, इट गिव्स मी enormous sites. I have no idea where to go, which site I should try with. Unless and until I go for many more sites, I cannot find out which is the best site I should opt it. But here, हमको एक ready-made पूरा sketch मिल जाएगा. Right. So this is how you can make use of Chat GPT, options, features, but you have to also add your own content. कभी भी पूरा का पूरा Chat GPT उठा के copy paste मत कर देना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, ऐसे भी कुछ एआई टूल्स हैं जो कि आपके मशीन लैंग्वेज, जो एआई जनरेटेड लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं और वो कंटेंट को खारिज कर देते हैं, और उसको हम बोलते हैं जीरो जीपीटी। एक साइट है जिसका नाम है जीरो जीपीटी, ठीक है। तो अगर आपको कभी जरूरत पड़े, किसी ने आपको एक लेटर भेजा, आपको जानना है इट इज ए मैन रिटन लेटर और इट इज ए मशीन लैंग्वेज और एआई जनरेटेड लेटर, हाउ टू नो दैट। तो अभी मान लो मैंने चार जीपीटी का यहाँ पे कुछ यूज किया, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पे पेस्ट किया। देखो, तो जब मैं पेस्ट करता हूँ और जब मैं डिटेक्ट टेक्स्ट डालता हूँ, ये क्या करेगा, ये मुझे बता देगा कि ये एक आदमी ने बनाया हुआ है या ये Yeah. मशीन ने बनाया हुआ है। ये सब डेटा पूरा पढ़ के दे देगा, प्रोसेसिंग देगा। योर टेक्स्ट इज मोस्टली likely to the human written, may include parts of generated by AI or GPT, देखा, क्योंकि मैंने आधा कॉपी किया, पूरा कॉपी नहीं किया, देख रहे हो आप। Okay. Okay. तो इसलिए थोड़ा चीज चार्ट जीपीटी से उठाओ और थोड़ा अपना कुछ डालो, देन यू कैन हैव ए मिक्स्ड कंटेंट एंड पीपल वुड बी हैप्पी वाचिंग दैट। Okay. Last question. Like, हाँ, how for like Excel के formulas वगैरह मिल जाएंगे वहाँ पे बिल्कुल हम लोग को? मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अभी देखो, मैंने एक चार्ट जीपीटी यूज किया, अभी मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ प्रॉम्प्ट को, ठीक है, यहाँ पे भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। जैसे आई एम वेरी मच कंफ्यूज इन दैट डेट फॉर्म, वो नो जो प्रॉब्लम, फॉर्मूला नो डेट का, प्रॉब्लम, आप डेट का नो प्रॉब्लम। फॉर्मूला बता सकते हो? हाँ, मुझे वही डिफिकल्ट लगा बस। सो देखो, राइट, हाउ टू कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन टू dates in Microsoft Excel। नॉर्मली मैंने पूछा, क्या दिया, द डेट इफ वो वाला देखा। फॉर्मूला। तो मैंने क्या यस। कहा था आपको कल बताते हुए, पीपल हैव गॉट डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस, बट द बेस्ट ऑप्शन इज डेट डेट डिफ। तो इफ। चार जीपीटी भी आपको डेट डिफ ही दिया, देखा। तो दैट। इस तरह से चार जीपीटी क्या करता है, इट इज कनेक्टिंग टू द वेरियस सर्च इंजिन्स लाइक बिंग, our Google or any other sites, and it gathers the information with more better clock speed। जो गूगल करके देता है उसके चार्ट बोर्ड से ये 1000 times बेटर है, जो एआई जनरेटिव टूल्स। ये हम मोबाइल पे यूज कर सकते हैं ना, लाइक कि बिल्कुल कर मेरा सकते हैं। स्ट्रेट वे क्वेश्चन इज लाइक इन हाँ, माय ऑफिस इट्स नॉट अलाउड टू ओपन any other applications or any other website, हाँ, so तो if आप कर if I सकते get हैं, stuck anywhere I can यू कैन use my गेट इट। mobile and get this, यस, right? यस, यस। आपको खाली एक बार रजिस्टर करना है openai.com में जाके, बस एक बार रजिस्टर करना है एंड आपके पास वो हमेशा रहेगा। फ्री वर्जन्स आप कोई भी वर्ल्ड वाइड कोई भी यूज कर सकता है। Okay, okay, thank you so much. नो प्रॉब्लम। Sorry. So we got some understanding about Chat GPT also, right? Yes, thank you so much. Yes. No problem. So यहाँ पे दोस्तों अभी हमारा डेटा प्रेजेंटेशन यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पावर पॉइंट में भी हम लेके जा सकते हैं। पीपल वुड बी हैप्पी वाचिंग द सेम। नाउ सी द ब्यूटी, थोड़ा समझना होगा। ये जो विजुअल्स आप पैटर्न देख रहे हो, इट इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड मूविंग टुवर्ड्स राइट, क्योंकि डेटा सब जगह पे पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता, आइडियली क्या होता, डायरेक्शन चेंज होता राइट टू लेफ्ट। अगर नेगेटिव होता तो बार का कलर कैसा देखना हम पसंद करते हैं, इन टर्म्स ऑफ रेड। डू यू एग्री? Mhm. राइट। नाउ लेट्स सी if I go for category 3 and deliberately changing some value to negative. Can you see now? Ready-made format. I don't need to go for extra efforts over there. Right. So this is how the beauty of our data bar style.
So all these things, whatever you are learning, people, nobody is going to demand from you. This is from your side. You have to present it. And trust me, nowadays this is playing a hot cake at the market. Yeah. So data bus style, first visual, how to do it, how to use it, how to navigate it, and how to present it. All these things we got a clarity. Any questions? No. Sure. All right. So with this, we'll go for a short break. Okay. So you can have a cup of tea or coffee, come back soon. So in my system for 17, so ideally we'll go for 4:30, 4:30. We'll be catching up again. Okay. Okay. Thank you. Bye bye. Because I'll be in mute, I'll be back by 4:30.
All right, so I believe everybody's back. Let's go to our next visual tool options. Okay. तो ब्रेक से पहले हमने देखा था how to make use of this data bar style and giving more add-on to the data and present it effectively to the audience. We have seen that. Now we'll see the other tool. Let's see, go to situation number 2. Same product wise USD we do have, right? So go to right side one more column and name it as visual and expand the column. Now select your USD column data, not the header, only the data points. And then go to our insert. You'll be having an option, a group called spark lines. And in that group, you'll be finding 3 different types of spark lines, naming line, column, window loss. Able to see? Check it out. Yes. So after selecting this USD column, going to insert and in this sparkline group, choose the option called column. So when you go for this column option, it will take you to a dialog box, something like this, asking कि आपका डेटा कहाँ पे है। डेटा हमने सिलेक्शन पे रखा है ऑलरेडी। फिर पूछा लोकेशन कहाँ पे आप दिखाना चाहते हो, विजुअल कॉलम का पहला सेल। तो हमने जब दिया ओके किया, कैन यू सी सम काइंड ऑफ विजुअल इंप्रेशंस इज क्रिएटेड, बट इट इज नॉट सो क्लियर, इट्स नॉट सो एमिनेंट। सो व्हाट यू कैन डू इज ओवर हियर, उस सेल के साथ साथ बाकी को भी सिलेक्ट करो। ड्रैग मत करना, ड्रैग करने से मतलब अलग हो जाएगा। उसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद होम में जाओ, वहां पे एक ऑप्शन मिलता है मर्ज एंड सेंटर। होम टैब में मर्ज एंड सेंटर, तो इमीडिएटली आपको एक मोर और लेस, डू यू गेट ए फील ऑफ ए कॉलम चार्ट? Yes. सो व्हाट इज दिस ऑप्शन अबाउट? Insert spark lines and column spark lines. कंफर्म करो यहाँ तक क्लियर जो हमने बनाया। Yes. चलो, तो जैसे कि मैंने आपको कहा, कभी भी आप डेटा बनाते हो, देन मेक श्योर दैट योर डेटा स्पीक्स ए ब्यूटीफुल स्टोरी टू द पीपल. So we can select product and USD, including the column headers, and sort by USD, largest to smallest. So you can make out from category 12, we got the maximum revenue, and that is what the first column is expressing about the data. And category 4, the least revenue, and this is stating in the end of the column. So this is how we can make our presentation better, even giving a add on this kind of sparkline to the data. And as I told you, this is more or less one type of infographic presentations in Excel. तो सवाल है तो पूछ सकते हैं।
सवाल नहीं है तो मेरा काम आसान हो जाता है. You should have a question. चलो ठीक है, आपने पूछा नहीं तो लेट मी आस्क यू. अगर कुछ माइनस हो तो वो उल्टा हो रहा है. हाँ, दैट्स फॉर श्योर. सिक, आपने इतना सब किया, लोगों का एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाएगा. पता है क्या पूछेंगे? दे विल आस्क, प्रभास, कैन आई just get those values embedded in each and every column unlike our charts? तो वो सब यहाँ पे नहीं हो सकता है, वो सब सिर्फ चार्ट्स में ही हो सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हो गया लोग चार्ट को पूछेंगे नहीं. माइक्रोसॉफ्ट इज ऑल्सो वेरी क्लेवर. तो उन्होंने क्या किया, दिस इज ओनली फॉर विजुअल्स. यू कैनॉट हैव डेटा लेबल्स, एक्सेस टाइटल्स, लेजेंड्स, ये सब कुछ भी यहाँ पे नहीं हो सकता है. बट यस, एज ए एड ऑन, what you can do, I'll take you through. अगर आपको चाहिए कि हाँ प्रवास में जो हाईएस्ट कॉलम है उसको थोड़ा अलग सा करके दिखाना चाहता हूँ और जो लोएस्ट है उसको थोड़ा अलग दिखाना चाहता हूँ, यस यू कैन चेंज द कलर्स. हाउ? जस्ट सी, यू कैन सिलेक्ट योर विजुअल. देयर इज अ स्पार्कलाइन टैब ऊपर एक्टिवेट होगा. ठीक है. सो दैट वुड बी नेमिंग एज ऑप्शन डिजाइन डिपेंड अपॉन द वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. और वहां पे दो अलग अलग टाइप के आपको ऑप्शंस मिलेंगे, स्पार्कलाइन कलर, मार्कर कलर. मार्कर कलर में जाना है, हाई पॉइंट ग्रीन कलर यू कैन चूज, एंड अगेन मार्कर कलर लो पॉइंट यू कैन चूज एज रेड. ठीक है, तो ये आप कर सकते हो. एंड you can see also your visuals, is it turning up in that color? Is it happening? For me, it's not happening. Might be because 2016 No, Microsoft. no, 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 no. It is there It's in okay. 2016. It is there. You can share your screen. I can guide you. Let me know once you're able to see Yeah, it. yeah, Yeah. I can see your screen. Select that. Can you see the last tab? Design is there. Design. Okay, yeah. Oh, now it's coming. Yes. There you go for high point first. High point to green. Make it green color. No, high point, don't go for red. Okay. Then low point, you can make it red. Low point. Okay. Now it's Correct. okay. I'm stopping the screen sharing. Yeah, Thank no problem. Shravendra, able to hear me? She's having some problem. you. Just give me a minute. Let him come. Again, you have to repeat otherwise. So, Supriya, how is about this data visualization part, data bars? What do you believe? Is it going to help you a lot in data presentation? Yeah, definitely. Mm. Actually, my role consists of the same thing. Like they wanted someone who is expert in Microsoft Excel and PowerPoint. So, anyways, I'm Mhm. going to do a PowerPoint session as well. Right, So no now, problem. That's what. Mhm. but like 50% तो confidence आ गया है कि I would be able to do. First of Good. मुझे ऐसे लग रहा था कि I should let go, मतलब मुझे जाने देना चाहिए था, वो लेना ही नहीं चाहिए था position. Mhm. Because I'm already working in one organization, because this particularly they want someone who can prepare reports. They want to bring some change, like this Mhm. particular role. They want someone to prepare SOP to Right. that. So maybe it will be helpful. I don't know how I would be able to implement, but I'll try.
I'm hoping I would Yes, be. yes. See, that's what we know also. Roma is not built in a day. So slowly and steadily we can make a difference at workplace. Because first you have to give it a try. So once you give it a Yes. try, give a feel, then your other side people also they will be giving their inputs, and that's how the report will be more polished and refined. Mhm. And there's Correct. one more session of yours. I mean to say, there's one more class of yours. Like I have seen in that the last one where it says that management and all those people can attend. So, is it going to benefit me if I attend that session too, or like how would you What is that? suggest? No, no. Like What's the that, name of the program? uh, I guess you have this advanced Excel, then you have Uh-huh. PowerPoint, and the third one wherein Excel you VBA have. macro. Yes, Macro. yes, yes, yes. That you are not ready now. You have to give Okay. some time to practice. Then you can join. Okay, so maybe after 5 6 months, if I get Not have. less, no, 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 not 5 6 months. In fact, even 1 or 2 months or after that also you can join. So not a Okay. problem. Yeah. All right. So Snehal, what's your perception? Are you getting some confidence to make the things better? Yes. Okay. Ravindra, is it audible now? Yeah, yeah, it's audible now. Okay, ठीक है. तो आपने ये स्पार्कलिन देखा कैसा हुआ या स्टेटस कैसा है आपके वहाँ पे? नहीं, मैंने नहीं देखा एक्चुअली. आई हैव टू रिस्टार्ट माय लैपटॉप. ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करिए. So Supriya, can you help Ravindra? Yeah, sure. Okay. तो रविंद्र जस्ट जी, जस्ट गिव सुप्रिया मी. जी आपको मदद कर रही है. The voice next या. is her only. Mm. Are you sharing your screen? या, जस्ट गिव मी 1 sec. आई एम ओपनिंग दैट एक्सेल शीट. Okay. या, नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. Okay, so now we are working on solution two. We have done with part one. So in part two, solution two, just add one more row over there in G column, type visual, like same we did. It's already there. See how we या. okay. So now select the F column, row number 7. ओके. Not the entire, from 7 till 19, 18, 19. Huh. Okay. Now come to insert. I'm going to say click on insert. After that, you would be able to see something says as spark lines. Can you see that? It's just above I. या, दिस वन. Yeah. Click on that. Yes, on spark line. Click on the cancel it. Click on the column which is दिस वन. above the yes, Uh-huh. right, Spark line right. column, right? And now give the location, like it's data range. It's already selected from 7 to 18. If you can see the second column, it's asking you where it, like what's the location. So give G7. Like click on G7 cell, yes, and then press OK. ओके. So now you can see it's giving you the data, but it's like it's a smaller version and it's not looking good. So what we will do is click on that particular cell. Are you in that particular cell? यस. Okay, now go to merge cell, like click on home. Let Sorry us, to disturb Supriya, but yeah, yeah. uh, Ravindra, please select the whole cell first and then merge and center. दिस वन. Yes, Okay. right. Yes, right. यस. Then go in the merge and center. Right. Correct, Snail, Yes. yes. And now you can see it's different, like it's not looking good. So what we will do is या. select that category A and B, the same thing like we used to do. uh, I mean to say alt ds formula for sorting, we'll do the sorting thing. So select those two lines, yes, then do alt ds. Okay, now sort by currency, USD, and it should be largest to smallest, and then okay. ओके. So now you got this. And like if you feel like you want to change the, like you want to give another colors to the highest one and then the another color to the smallest one. So uske, huh,
Now click on that table, that graph, just single click. Are you able to see that spark line? It will get activated up. ऊपर click, देखो spark line This दिख रहा one. है. Click Yeah. on that. Yes. Okay. So now can you see a maker color? उसके नीचे. Hmm. Yes. Now high point को हम एक color दे सकते हैं यहाँ पे. Just select Okay. green. We have selected green, so it's your wish. And Yeah. Okay. lower point को एक color दे सकते हैं, जैसे whatever color you want. Hmm. Okay. Yeah. Low point, second option. High point के नीचे. So Yeah, I given this as a green. ओके सिलेक्ट हो गया. दैट्स इट. Yeah. थोड़ा सा जी कॉलम बड़ा करो ताकि आपको ठीक से दिखाई देगा. आई गेस इट्स वेरी स्मॉल. सो Yeah. अब दिखाई दे रहा है. Maybe you Okay. can select Nice. red color so it would be more visible to you because blue और green में दिखाई नहीं दे रहा है ना ठीक से green. Yeah. Okay, that's it. Sure. Okay. Thank you. So it's a good team effort. Thank you, Snehal and Supriya. So Ravindra, is it clear? जो आपने देखा सब सुना? Yeah. Okay. चलो. So next, I'm taking the control back on the screen. Now, अभी यहाँ पे देखो, इतना सब हमने किया. No doubt it looks good, but over here, जैसे कि मैंने आपको कहा, if you see the pattern of these columns, it is always going from the axis towards up, क्योंकि values of positive है. अगर negative होता, definitely it should be below to the axis. अगर negative है, the color should be red. तो चलो एक देखते हैं. -3500. So I just tried something negative. Is it turning the pattern? Yes. Right. तो यहाँ पे जो सब हमने सीखा, no doubt it gives a beautiful picture and people love to see that. Now what if I have more than one negative? देखो, अगर मान लो मैंने कैटेगरी 5 को भी यहाँ पे नेगेटिव किया, तो क्या हो रहा है? It's not taking in red color. वो फिर blue राइट, में. राइट. तो लेकिन ये कौन सा रेड बनाया? जो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है उसको उसने रेड बनाया, राइट. Okay, जो highest लेकिन amount. हाँ, बिकॉज द मोर द नेगेटिव द वैल्यू विल बी लेस, है कि नहीं? दिस इज द मैथमेटिकल लॉजिकल फॉर्मूला, नथिंग एल्स. अभी क्रेडिट कार्ड से हम खरीदते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज आवर्स, बट कैन यू क्लेम दैट इट इज योर्स? No. So technically that is someone else. So similarly, though it is negative, the value is more, but it is negative only. So in this case, what people may ask you, प्रभास, नेगेटिव सबका कलर रेड होना चाहिए, एक ही का क्यों हो रहा है? तो वहां पे how to customize that? See the beauty. You can select that spark line. पहले देख लो, spark line टैब में जाना है. यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है लो पॉइंट, उसको डीएक्टिवेट करना है. उसके नीचे मिलता है नेगेटिव पॉइंट, उसको एक्टिवेट करना है. नाउ सी द ब्यूटी. देखा, अभी जितने भी नेगेटिव्स आएंगे, डायरेक्शन भी चेंज होगा और कलर भी रेड होगा. सो दैट्स हाउ यू कैन कस्टमाइज दैट. चेक इट आउट. इज इट हैपनिंग? Yes. राइट. तरुण जी, हो रहा है? Yes, happening for me as well. Yeah, it's working for me. Okay. Now, once we have done with this, situation 2 हमने देखा. Now we'll proceed to situation 3. So now we are going to see when you have some historical records, how to present it effectively. देखो, वही product wise 2019 में कितना बिजनेस हुआ है, 2020 में कितना हुआ है, सब हमारे पास रिकॉर्ड है. अभी इसको प्रेजेंट करना है अच्छी तरह से. कैसे करेंगे? फर्स्ट थिंग, keep your cursor next to 2020 and insert a column. Alt IC, एक एक करके प्रेस करो. Alt IC, I for insert, C for column. कॉलम ऐड हुआ. And to repeat the last step, F4.
और एक कॉलम ऐड होगा। So F4 is basically to repeat the last action, right? So whatever Yes. action perform, it's going to perform the last whatever we did. Absolutely. Okay. Now, go to our next column and there you type name called growth and the other column name it as visual. Okay. Now, once you do this, select your growth column the way I am selecting and type the formula. क्या होगा? Basic mathematics is equal to 2020 minus 2019. Yes, done. Now, come to visual column and select the same, go for equal to, taking the reference of growth. आपका फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ है क्या ग्रोथ कॉलम में? Okay. Because I can see K values L में दिख रहा है. 2020 दिखा रहा है। मतलब जो 2020 का है वही कॉपी Okay. हुआ है. Okay. Okay. Sorry. So equal to 2020 minus 2019. Yeah. Yeah. Now going to the visual. Yeah, thanks for reminding me. Equal to taking the reference of growth and hit Control Enter. So this is how we got two columns ready. ठीक है? तो अभी तक हम जो कर रहे हैं काम, आपने क्या क्या सीख रहा? I'm not talking about the topics. In general, आप क्या क्या सीखे अभी तक, कल से लेके आज तक? Like we learned some formulas, then how to present the data, then we Right. learned how to calculate the date, then Mhm. how to do the filtering, whatever unsort मतलब जो clear data नहीं था, messy data था, उसको ठीक से कैसे करना है, फिर sorting सीखा, फिर Okay. table में filter कैसे apply करना है वो सीखा. Right. Good. How about Ravindra and Snehal? आपका कुछ inputs है? Sorry. आपका कुछ इनपुट्स है? ये सुप्रिया ने उनका ओपिनियन दिया कि मैंने ये सब सीखा बोल के, आपने क्या सीखा? Like a formulas, different formulas, how to clean the data, how to do sorting, how to add slicer or filters, how to visualize the data in data in Excel. तो मोर और लेस सेम ओनली, करेक्ट? Yes, yes. हाँ ठीक है। कुछ अलग रविंद्र जी, आपका कुछ ओपिनियन? Lot of shortcuts we have seen. The shortcuts key, I mean, then how to clean up the data. ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर बुलेट पॉइंट के हिसाब से बात करते हैं, समरी पॉइंट के हिसाब से, एक तो आप सीख रहे हो हाउ टू यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यस, Yes. and you are Yes. increasing your speed. Second, Yes. अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, व्हाट शुड बी द राइट फॉर्मूला, वो भी आप एक पैटर्न मत सीख रहे हो, राइट? नाउ व्हाट इज द बेस्ट फीचर्स टू यूज बाय लुकिंग एट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कौन सी जगह पे कौन सा टूल्स कौन सा फीचर यूज करना है, ये भी नॉलेज आपको मिल रहा है, राइट? Along with that, how to create our data, डेटा मॉडलिंग कैसा होता है, डेटा कैसे बनाते हैं, वो टेक्निक भी आप सीख रहे हो. Do you agree with me? Yes. So all this combined together
you are getting in your training. ठीक है, तो चलिए, this is just to refresh your memory, just to catch up what you are learning as a takeaway. देखो, अभी हमारे पास ग्रोथ भी है, विजुअल भी है, तो विजुअल कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया। अभी हम देखेंगे, पहले देख लो कि और क्या टूल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। होम टैब में एक बढ़िया सा ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जिसका नाम है आइकॉन सेट्स। देख लो, It's there. it comes with 4 broad categories: directional, shapes, indicators, ratings. जो आपको पसंद है आप उसका सहारा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि प्रभास व्हाट्स योर बेस्ट रिकमेंडेशन, मैं कहूंगा अगर आप ज्यादा करके प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज में काम करते हो, देन यू शुड टेक द शेप्स एंड इंडिकेटर्स ऑप्शन, दैट विल बी मोर आइडियल। अगर आप ज्यादा करके टेक्स्ट में काम करते हो, जैसे कि फीडबैक कलेक्ट करना, असेसमेंट मैट्रिक्स, बैलेंस स्कोर का टेम्पलेट, ऐसा सब ज्यादा करके टेक्स्ट के ऊपर काम करते हो, जैसे कि एक्सलेंट, पुअर, एवरेज, गुड, बैड, ऑल दिस, ऐसा टेक्स्ट के ऊपर ज्यादा काम करते हो, यू शुड टेक दिस रेटिंग्स काइंड ऑफ ऑप्शंस। If you are more working with the numbers, say you are into the sales or marketing, logistics, supply chain, or you are into the accounts, finance, or you are in HR where you are looking at the attrition rates and all, तो यहाँ पे आप ये directional option ले सकते हो। But there is no hard and fast rule. Microsoft ने ऐसा कोई tutorial भी नहीं बनाया कि हाँ आप अगर HR में हो तो यूज करो। It's up to completely your call. तो जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है कि दैट इज गोइंग टू गिव ए एड ऑन टू द डेटा, यू कैन टेक इट। सो फॉर द टाइमिंग लेट्स टेक द फर्स्ट ऑप्शन, द डायरेक्शनल कीज, 3 डिफरेंट एरो कीज ऑप्शन, उसको ले लो। नाउ इट्स समवट लुकिंग बेटर, यू कैन सी। तो चलिए अभी थोड़ा एनालाइज करते हैं। ये ग्रीन कलर वाला जो की लगा हुआ है, अप एरो की, इसका मतलब क्या हुआ? That is positive figure. मतलब पॉजिटिव ऑफ व्हाट? मतलब यहाँ पे नेगेटिव्स भी मुझे कुछ दिखाई दे रहे जो कि डाउन एरोज में है, नहीं, जैसे कि ग्रीन कलर अप एरो की का मतलब क्या हुआ? लार्जेस्ट नंबर नहीं, लार्जेस्ट भी नहीं बोल सकते क्योंकि आई कैन सी 3270। ग्रोथ एनालिसिस हम कर रहे तो जो 19 20 और हाँ, 19 का जो बीच का है, 2019। शोइंग अ हायर ग्रोथ, मतलब नहीं जो नहीं अप नहीं, जा रहा है, मतलब सिंपल रखो, अप एरो जो सिंपल है। रखो, सिंपल। देखो, जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे लोग आपके डेटा देखना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं। 2019 से 2020 जब हमने कंपेयर किया, बिजनेस ग्रोथ जो ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड है, मतलब बिजनेस अच्छा हो रहा है। हाँ, राइट राइट। इफ यू गो फॉर रेड कलर डाउन एरो की, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, करंट ईयर बिजनेस इज गोइंग डाउन। ये सब समझ में आ रहा है। एंड हाउ अबाउट द येलो कलर एरो की? कैन यू सी दैट? Can you make out any story of the yellow color arrow key? Anybody? No doubt, जो भी आता है मन में। स्टेबिलिटी दिखा रहा है कि नॉट ग्रोथ ऑल्सो, और जो मतलब लॉस भी नहीं हुआ है बट इट्स अ स्टेबल, ऐसे कुछ। Is it giving any clarity? जो आप बता रहे हो, आप खुद convinced हो? See, simple तरीके से, as a layman, if I am looking at the data, how it can be both positive, negative, yellow color कैसे हो सकता है दोनों? इधर पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, उसमें से कुछ बात हो सकती है, लेकिन दोनों कैसे हो सकते हैं? तो टेक्निकली यहाँ पे लोगों को इंफॉर्मेशन देने की बजाय हम लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसा एज इट इज रूल्स अप्लाई मत करना। ये जो आइकन सेट वाला रूल है, यू कैन नॉट अप्लाई एज इट इज, इसको थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ता है। तो कस्टमाइजेशन किस तरह से? जैसे कि कंपेयर टू लास्ट ईयर बिजनेस इज गोइंग अप, वी शुड गो फॉर ग्रीन कलर अप एरो की। अगर डाउन हुआ तो रेड कलर डाउन एरो की। In case any point of time there is no growth or degrowth, the business volume remains the same, there should be yellow color icon key. Make sense? How to do that? देखो, पहले 1 मिनट मेरे स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखो। मैंने सिलेक्ट किया, मैंने कहा था कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बैकस्टेज व्यू को अगर देखना चाहते हो तो मैनेज रूल्स में जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, फिर जाना है एडिट रूल के अंदर। देखो,
अभी यहाँ पे हमको सब काम करना है। कैसे? डेटा टाइप यहाँ पे दिखा रहा है परसेंट, लेकिन हमारा डेटा कैसा है? नंबर में। तो पहले हमको चेंज करना पड़ेगा नंबर। फिर अगेन दूसरा जो डेटा टाइप है परसेंट, उसको भी नंबर में चेंज करेंगे। फिर यहाँ पर जो ग्रीन कलर अप एरो की आइकॉन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि अप एरो की कहाँ पे यूज होगा? व्हेन इट इज मोर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट हमको ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन होने से ही दिखना चाहिए, तो हमने यहाँ पे भी चेंजेस की। तो एक्सेल इज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड एंड कस्टमाइज द रेस्ट ऑफ द रूल्स ऑटोमेटिकली। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं उसमें। बट यहाँ पे एक चीज जो बढ़िया सा है, जिसका नाम है शो आइकॉन ओनली, ये चेकबॉक्स को ऑन करना ना भूलें। नाउ क्लिक ओके। नाउ अगेन क्लिक ओके एंड सी द ब्यूटी। ओनली टू रूल्स। जहाँ पे बिजनेस बढ़ा है, ग्रीन कलर अप एरो की। जहां पे कम हुआ है, रेड कलर डाउन एरो की। नो येलो कलर symbol. Can you see that? Mm-hmm. So this is how you can customize the rule. Chalo, give it a try. Conditional formatting, manage rules, edit rule. So you should change this to number. This is only greater than, show icon only. These are the changes. Any difficulties, feel free to ask. 10. Okay? Now, once we have done over here, then suppose you are watching the data, येलो कलर कहाँ पे चला गया? जैसे कि हमने कस्टमाइज किया, वैल्यू इफ रिमेन्स द सेम। अभी मान लो कैटेगरी 6 में 1730 है, 2019 पे, 2020 में भी सेम हुआ। कैन यू सी दैट ऑटोमेटिकली दैट येलो कलर अपीयर्स? Mm. ठीक है। तो इस तरह से हम रूल्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो दैट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस एट योर वर्क प्लेस, एंड दिस इज कॉल्ड अगेन मोर और लेस ए इन्फोग्राफिक प्रेजेंटेशंस। एंड व्हाट इज दैट अबाउट? जैसे कि हमने डिस्कस किया था, this is nothing but it is available in our home tab। Mm-hmm. Conditional formatting. होम के अंदर ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, Icon set. icon sets, and this is what you mostly find on all the big force presentations also। I'll show you one big force presentations as well, so that you can also get some confidence कि ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि लोग सच में यूज करते हैं। देखो, कुछ Mm-hmm. करने की जरूरत नहीं, मेरे स्क्रीन के ऊपर थोड़ा ध्यान से देखो। You know, see over here, this is one of the PwC presentation. So top 20, the players who are spending more into the research and development. If you look at their presentation, how it is. So here, if you see, this is nothing but our infographic presentations, the icon sets, it is applied. Numbers है, कहाँ पे है numbers? Numbers है last में. That is not a priority. But whoever is looking at, they can see. But this is what the story they are making compared to previous year। अगर इस year की बात करते हैं, तो in this case, Amazon और Alphabet, they are spending more. Novartis, again more. But if you look at Microsoft and Rossi and Intel, they are spending less. So this is how immediate story you can make out, Mm-hmm. right? चलो, थोड़ा बहुत हमने देखा कि ऐसा सब कैसे
हमारा विजुअल फॉर्मेट जो टूल्स होता है उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं एक्सेल में, और अपना डेटा प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये सब चीजें हमने देखा। अभी एक काम करते हैं, सिलेक्ट योर प्रोडक्ट्स 2019 एंड 2020, कॉपी करो एंड दो तीन लाइन आइटम छोड़ के पेस्ट करो। ठीक है, नाउ 2019 को यहाँ पे डाल दो टारगेट हेडर, एंड 2020 को डाल दो एक्चुअल। Now, see the problem statement, stay focused. मान लो हमारे पास कैटेगरी वाइज जो भी हमारा टारगेट था सब मौजूद है, और हमने जो एक्चुअल सब बेचा है वो सब भी डिटेल्स हमारे पास मौजूद है। बॉस ने मुझे कहा कि प्रवास एक काम करो, एक्चुअल कॉलम में ऐसा एक प्रेजेंटेशन दो जैसे कि अगर आपका टारगेट जो है, इफ इट इज लेस देन द एक्चुअल्स टारगेट, or better the other way I'll put it, if actuals is greater than the target, it should be highlighted with green color. If actuals is less than the target, it should be of red color. लेकिन जो भी रेड या ग्रीन होगा वो सिर्फ एक्चुअल कॉलम में ही होना चाहिए। पढ़ लो ठीक से। Any difficulties in understanding, do let me know. So जो भी एप्लीकेशन होगा, कलरफुल एप्लीकेशन सिर्फ एक्चुअल कॉलम में होना चाहिए, but satisfying the conditions. Actuals, if it is more than the target, green color. If actuals is less than the target, then red color. Right? You got 2 minutes. I did it, Okay, you can share your but screen. but that's not. I mean to say, ठीक से नहीं हुआ है, but like whatever as per my understanding, I've done. I might be wrong also. I'll just share. Okay, no problem. That will decide.
मतलब ये what I बीच का कलर did, क्या रेड, सिर्फ दो ही कलर होने चाहिए, यहाँ पे कितने कलर्स हैं? वही तो right, I did conditional formatting and then I just applied new rule. Then हम्म यहाँ पे format style to color scale, lowest value I selected as red, then हम्म पता नहीं को कैसे highest value I selected green, हम्म। and then did this, but I don't know how I landed up with this all these That's things. what that color pattern, that palette kind of look is not going to make any sense. We need only two colors. That we are Yes. very clear. So this is not going to work, right? Yes, yes. Yes. Yes, Snehal or Ravindra, anybody? मेरा भी यही हुआ है तो बच्चे। I think we have to do something with the target. नहीं, आपने आपने जो किया उसमें से दो ही कलर दिख रहे हैं। नहीं, ये अभी जो ओके, ठीक है, वही है। ठीक है, ठीक है। Also, I स्नेहा, tried this way. Yes. कैसे हुआ? कोई प्रॉब्लम, राइट? स्नेहल, आपने कुछ ट्राई किया? ट्राई किया बट द कलर डिफरेंस नहीं आ रहा है। ओके, तो चलो यहाँ पे जो सब हमने ट्राई किया, ओके, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। ठीक है, रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो आई टेक कंट्रोल बैक ऑन माय स्क्रीन, जस्ट वॉच माय स्क्रीन। So in this situation, we tried our best and we have gone for different types of things to do our own R&D or trial and error, but that is not sufficient and it doesn't help us. So, isn't it? Reason is, देखो, हमने क्या किया यहाँ पे, हमको लगता है कोई भी एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल ले लो, इसमें से जो रूल्स हैं यहाँ पे कोई काम का नहीं है। तो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग रूल्स काम के नहीं है, तो हमको अपना रूल अगर बनाना है, वी हैव ए ऑप्शन कॉल्ड न्यू रूल। ठीक है, पहले देख लो। So I'll go for new role, and in this dialog box, there is an option called use a formula to determine which cells to format. Okay. Okay. Now I'll go for this formula box. ठीक है, पहले देख लो। I will try this actual, but the moment जब मैंने actual को select किया, उसने दो डॉलर सिंबल लगा दिए, एक कॉलम से पहले, दूसरा रो से पहले। Can you see that? सो अगर हमने ऐसा लिया तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिर्फ एक ही सेल को अप्लाई करेगा, लेकिन हमारा जो जरूरत है पूरे कॉलम के लिए जरूरत है। डू यू एग्री? सो instead of locking the cell, we have to keep it open as a general cell, and for that keep hitting F4 keys। तो ये ऑटोमेटिक डॉलर सिंबल सब हट जाएगा। फिर हम लेंगे ग्रेटर देन टारगेट। टारगेट में जब लिया, फिर से उसने उसको लॉक कर दिया, जो कि हमको नहीं चाहिए, तो उसको भी हम जनरल कर देंगे। जब ये सेटिस्फाई करेगा कि एक्चुअल अगर टारगेट से ज्यादा हुआ, तो अभी यहाँ पे फॉर्मेटिंग क्या चाहिए? फॉर्मेटिंग क्या चाहिए? शुड बी ग्रीन, है कि नहीं? सो विल गो टू फॉर्मेट। हियर विल बी हैविंग ए fill tab, we'll go for green. Here we have a font tab also, which is optional. You can go for making it bold, and you can turn the high definition font color, say white. Now click OK. कुछ formatting ऐसे दिखेगा। चलो ठीक है, हमको वही चाहिए। Now I click OK and this is ready. Can you see that? Similarly, I need to add one more conditional formatting. Going to Home, conditional formatting, new rule, use a formula to determine which cells to format. Then again taking actual, making it a general cell, less than logic we have to apply for red. Target, again go for less than key, and then format, then go for the fill tab over here, right? So I'll go for fill, I'll go for red color, I'll go for font and bold and automatic font color. So now click OK. This kind of formatting will be applied. Done. So can you see now over here? Now why 1730 no application? Because the value is same. Actuals is exactly meeting with the target. So that condition we did not give anything. That's why it is showing no color.
But if you go and try something, say I'll change this 1200 target and actually is 1730. So which color is going to apply? Green. Something green. You got it, right? Give it a try now. So any difficulties, if you have, you can ask me. Right? Yeah, done. Okay. So this is how we have seen how to make use of all the visual tools options, people. And whenever there's need, how to make use of conditional formatting with our own rules and present our data effectively. So now we are going to discuss the next sheet. It's the most important formula of our Microsoft Excel, naming called VLOOKUP and HLOOKUP. So VLOOKUP, it is one of the essential formula which will be technically being used to search our records in a huge volume of information. So basically डेटा को सर्च करने के लिए ये मदद करता है. तो सर्च तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं कंट्रोल एफ करके, लेकिन कंट्रोल एफ में क्या होता है, एक ही टाइम पे एक ही डेटा आप सर्च कर सकते हो. सपोज मान लो मुझे एक साथ 10,000 1 लाख आइटम भी ढूंढना है, तो इन दैट केस वी हैव टू एंगेज आवर फॉर्मूला नेमिंग कॉल्ड VLOOKUP. लेकिन ये काम कैसे करता है, चलो देखते हैं. सी, फर्स्ट मेरे स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखो. Even if you are aware of VLOOKUP or working, or if you do not know, just focus. Suppose say this is my catalog where brand and rates are there. And I am having a list of brands against of which I need to populate the rates by looking at the catalog. तो हम काम कैसे करेंगे? तो एक एक करने की बजाय हम लेंगे सहारा VLOOKUP का. वे ये VLOOKUP कैसा करता है काम? V stands for vertical. जब मैंने देखा कि ये पूछा पहला आइटम क्या, लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू का मतलब क्या है? सो वट एवर यू हैव विथ यू टू लुक इनटू, दैट इज कॉल्ड योर लुकअप वैल्यू. तो हमारे पास क्या है ढूंढने के लिए? ए सर. सो दैट बिकम्स माय लुकअप वैल्यू. ठीक है, एलिमेंट इज क्लियर कि लुकअप वैल्यू क्या होता है, समझ में आ गया? राइट. कमा. फिर क्या पूछा? टेबल एरे, मतलब कहाँ पे ढूंढना है. सो हमको कैटलॉग के अंदर ढूंढना है, तो पूरा का पूरा कैटलॉग बन गया मेरा टेबल एरे. सो टेबल एरे का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया? Yes. नाउ
comma. What is the next one? Column index number. COL stands for column index number. तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनो। जब फॉर्मूला इस तरह से पूछता है, एक स्टेप पीछे आओ, थोड़ा ध्यान से देखो। जब हमने लुकअप वैल्यू लिया एक्सेल में, उसका फॉन्ट कलर चेंज किया ब्लू कलर, और यहाँ पे उसने ब्लू कलर बॉर्डर भी डाल दी। लेकिन जब टेबल एरे की बात आई, उसने चेंज कर दिया मरून कलर, और यहाँ पे भी मरून कलर बॉर्डर उसमें डाल दिया। ऐसा वो सेटअप सब क्यों बना रहा है? जस्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड कि जब मैंने टेबल एरे दे दिया, इसने बॉर्डर अप्लाई कर दिया, और ये समझा रहा है कि आपको इस बॉर्डर एरिया के अंदर फोकस करना है। Now, in this border area, how many columns are there? There are two columns. How you read your data? From left to right. So what is the leftmost column? Brand, column number one. What is the immediate right? Rate, column number two. So since we have only two columns, this is how we read our data. But out of these two, which is already there with us, we have already got brand with us. What we are looking for? We are looking for rate. Rate कौन से column में मौजूद है? Second column में. So how to define column index number? Is it clear? Yes. Right. Comma. Now it is asking range lookup, true, false, approximate match, exact match, बहुत कुछ पूछ रहा है. Forget about this. भूल जाओ कि VLOOKUP ऐसा कुछ पूछता है. Ensure that VLOOKUP always ends up with zero. अभी सवाल ये है कि ये जीरो का मतलब क्या है? जीरो स्टैंड्स फॉर नथिंग बट वन टू वन मैच और एग्जैक्ट मैच. तो अभी किस चीज का वन टू वन मैच करता है? जो हमने लुकअप वैल्यू लिया. अभी देखो यहाँ पे एसर का स्पेलिंग कैसा है? ACER. इन दिस टेबल एरे अगर एसर का स्पेलिंग ACER है, तो इसको हम बोलते हैं वन टू वन मैच. अगर ये वन टू वन मैच करता है, देन करस्पॉन्डिंग कॉलम जो नंबर टू हमने डाला, उसका वैल्यू यहाँ पे उठा के वो देगा. And that is what the significance of typing zero, to make it happen as one-to-one match or exact match. Now formula is ready. Enter. The same we can apply for others. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? डेल, सैमसंग, तोशिबा के केस में आंसर नहीं मिला. तो क्या ये ब्रांड्स हमारे लिस्ट में नहीं है? बिल्कुल है. तो फिर ये तीनों के साथ नाइंसाफी क्यों? देखो, जब हमने डेल का फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला जब हम नीचे कॉपी कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? बॉर्डर भी नीचे एक एक सेल करके नीचे जा रहा है, देख सकते हैं, जिसके चलते हुए ये प्रॉब्लम आया. तो अभी क्या करेंगे? भले ही ये हम ढूंढ रहे हो एसर या तोशिबा, माय एरिया इज फिक्स, ये लोकेशन पे ढूंढना है. तो चलिए, गोइंग बैक टू द फॉर्मूला अगेन, व्हिच इज क्रिएटिंग ए ट्रबल. जो एरिया में बॉर्डर लगा है, बॉर्डर कहाँ पे लगा है? हमारे C3 से लेके D13 तक. सो जो एरिया में आपका प्रॉब्लम हो रहा है, जो मूवमेंट हो रही है, उसको सिलेक्ट करके लॉक करना है. और जब हमने लॉक किया ना, ये नीचे जाएगा ना राइट में मूव करेगा, कहीं पे भी नहीं. लेकिन फॉर्मूला सिर्फ एक ही सेल में हमने रेक्टिफाई किया, पूरे रेंज में अप्लाई करना है. व्हाट इज द शॉर्टकट? कंट्रोल Control Control enter. enter. एंटर. So this is how we are supposed to apply our VLOOKUP formula, right? Any difficulties in VLOOKUP? Please confirm or ask me questions. Yes, done. Well, Ravindra and Snehal, any questions from your side? No, done. Okay, Yeah, done. fine. Now I'll be looking at our H lookup. तो जैसे कि V lookup stands for vertical lookup, H lookup stands for horizontal lookup. तो जब आपका डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट या रो फॉर्मेट में होता है, तो हम वहां पे वी लुकअप इस्तेमाल नहीं कर सकते. उसके लिए लेना पड़ेगा एक्सेल का फॉर्मूला, जिसका नाम है एच लुकअप. तो अभी ये एच लुकअप कैसे काम करता है? जस्ट लाइक वी लुकअप ओनली, लेकिन थोड़ा चेंज क्या होगा? वी के बदले एच आएगा, और कॉलम इंडेक्स नंबर की बजाय आएगा रो इंडेक्स नंबर.
दिस इज द ओनली चेंज। ठीक है, तो चलिए वही डेटा हमारे पास है, हमारे पास एक कैटलॉग है ब्रांड और रेट के साथ। उसके नीचे सिर्फ ब्रांड्स लगे हुए हैं और हमको रेट्स निकाल के डालना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रैक्टिस बनाया हुआ है, पहले एरिया को सिलेक्ट करो, एंड देन गो फॉर इक्वल टू एच लुकअप। फॉर्मूला को पढ़ो, क्या पूछा? lookup value. तो वी लुकअप भी पूछ रहा था, लुकअप वैल्यू ओनली, है कि नहीं? तो लुकअप वैल्यू का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है ढूंढने के लिए, क्या है ढूंढने के लिए? ए सर, पहला ब्रांड, डू यू एग्री? Yeah. कॉमा, फिर क्या पूछा? टेबल एरे। वीलुकअप भी पूछता था टेबल एरे, मैंने बताया था टेबल एरे का मतलब क्या है, कहाँ पे ढूंढना है। तो हमको ये पूरा का पूरा लिस्ट देना है। हम ब्रांड से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो सैमसंग से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ व्हेन आई सिलेक्ट दिस एंटायर एरे, व्हेन आई कॉपी दिस फॉर्मूला टुवर्ड्स राइट, दिस एरे इज गोइंग टू मूव राइट, यस और नो? फॉर्मूला जब राइट में कॉपी करेंगे तो ये भी रेंज एक एक सेल राइट में मूव करने लगेगा। जैसे वीलुकअप के केस में प्रॉब्लम आ रहा था, डेल Yes. तोशिबा सैमसंग नहीं दिख रहा था, वो प्रॉब्लम यहाँ पे भी आएंगी, ठीक है नहीं? तो जब पता है कि हमको ये प्रॉब्लम आएंगी, देन व्हाई डोंट यू रेक्टिफाई द फॉर्मूला इन द डिजाइनिंग मोड इटसेल्फ? क्या करना है? लॉक कर देना है। Yeah. नाउ once we go for this over here, then comma, जैसे कि फॉर्मूला क्या पूछ रहा अभी? रो इंडेक्स नंबर। वी लुकअप क्या पूछता था? कॉलम इंडेक्स नंबर, इजंट इट? Mm. क्योंकि Mm. वहां पे डेटा वर्टिकल फॉर्मेट में था, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है। तो मैंने बताया था एक स्टेप पीछे आना है और पीछे आके हमारा बॉर्डर एरिया जो है उसको हम देखना है। उसमें कितने रो आइटम्स हैं? Two. Brand is the first row, rate is the second row. Out of these two, which is already there with us? Brand is already there with us. What we are looking for is the rate. Rate is in which row? Second. So we should go and define row index number as 2. Now, comma. Then क्या पूछा? Range lookup, है कि नहीं? Yes. तो range lookup अभी मैंने बताया था वी लुकअप के केस में क्या लेना है? Should be Exact always. stand should be exact match or one-to-one match, right? Now, once this is ready, bracket close. Formula is ready only for a cell, but we need to apply for the entire range. What is the shortcut? Control enter. Control enter, and we got the answer. So this is how, whenever there is a need, people, how to make use of our H lookup, that we got the clarity. ठीक है? तो V lookup कैसे यूज करना है, H lookup कैसे यूज करना है। V lookup अगर डेटा वर्टिकल में है तो यूज करना है, H lookup जहाँ पे डेटा हॉरिजॉन्टल में है आपको यूज करना है। तो चेक इट आउट। H lookup is working fine. Any doubt, any queries? मेरा H lookup हुआ नहीं, like Okay, I got a error. no problem. You can share your screen. Hmm. तो रविंद्र आप हेल्प कर सकते हैं सुप्रिया को? Yes. ओके, See, this is the formula that I took. So shall I remove everything and start from beginning? No, actually, you have selected the table. I mean, the array table, but you have to select the value, VLOOKUP value. We go to that table. So when our this bracket is started, no, so can you just This one you're saying? your Wait, I'll cursor remove this that entire formula? formula. Can you just edit? Wait, Yeah, yeah, we can just a minute. Is equal to H lookup. Then first look I'll up select value. this Yeah, rate. yes, Hmm. yes. Then comma. Yeah, Mm, then that complete table. You can select from brand. Yeah. mhm. Then I'm locking this, Then right? then give the F4 in. Then Yeah, I comma. did it.
comma Row index number, that will be 2 2, because rate. comma 0, and then now it's there. Okay. I'll do it. Thank you. All right, so I believe it's clear. Yeah, yeah. Yes. No. Now, can I take that everyone is clear with our VLOOKUP and HLOOKUP formula? Yes. Yes. Okay, बहुत बढ़िया. Now, regarding the application, VLOOKUP or HLOOKUP can be applied between two different Excel sheets, two different Excel files, or you can apply in between the same worksheet itself, top to bottom, left to right, you can apply. But there are certain rules you need to follow for VLOOKUP and HLOOKUP. Okay, जो कि बहुत ही important है. Stay focused. देखो, rules क्या कहते हैं? Okay. Rule number one, VLOOKUP says that the data has to be in vertical format, then only I can help you out. Now the question is which data has to be in vertical format? ठीक है? तो VLOOKUP में दो डेटा है. अभी देखो ये है कैटलॉग और ये है हमारा लिस्ट. तो जो कैटलॉग है, जो मास्टर डेटा है, जो यूनिक लिस्ट है, वो डेटा आपका वर्टिकल में होना जरूरी है. ठीक है? सो कौन सा डेटा वर्टिकल में है पता चल गया. Mhm. HLOOKUP says that if the data is in horizontal format, then only I can help you. Now again, which data to be in horizontal format? The master data or the vendor data or the catalog, whatever you treat, you can consider. Okay. Now rule number two, VLOOKUP says that there should not be any duplicate where in the master data. So if you look at over here, brand, there should not be any duplicate. So Samsung, Toshiba, Dell, HP, anything you talked about it, there should not be any duplicate. And if at all any duplicate is there, VLOOKUP will always pick the first value because VLOOKUP works with the unique data entry. Okay. Similarly, there should not be any duplicate in our master data for horizontal lookup also. तो यहाँ पे जो master data हमने लिया, brand row में duplicate नहीं होना चाहिए. Now coming back to rule number 3, VLOOKUP says that the data flow has to be always left to right. इसका मतलब क्या है? देखो, मान लो जब हमारा डेटा हमारे कैटलॉग वेंडर ने दिया, गलती से डेटा कुछ इस तरह से बना के दिया, then VLOOKUP cannot read our data from right to left. तो इसलिए जो डेटा है ऐसा होना चाहिए, बट जरूरी भी नहीं है कि रेट वाला कॉलम इमीडिएट ब्रांड के राइट में होना चाहिए. इट कैन बी समथिंग लाइक दिस ऑल्सो, नो इश्यूज. लेकिन जब आप डेटा सिलेक्ट करते हो, you should start selecting with your common data, say brand, and end up with your rate. You should not select anything before brand, or you should not select anything after rate also, right? Now, having said this over here, so data flow has to be left to right. We got the basic understanding. Similarly, for HLOOKUP, the data flow has to be always top to bottom. ठीक है? तो सपोज यहाँ पे मान लो कि वेंडर ने कैटलॉग देते वक्त कुछ डेटा ऐसा दिया, तो HLOOKUP cannot read our data from bottom to top. So this is the reason why these are the minimum rules you must always remember whenever you go for application of VLOOKUP or HLOOKUP. ठीक है, एक बार रूल सब देख लो, कुछ क्लियर नहीं हुआ तो पूछ सकते हो आप.
this VLOOKUP and lookup rule is that there should not be any duplicate value. But in case if there is any duplicate value and still you want to manage or sort the data, then what should be the option in that? No, even if you have the duplicates, VLOOKUP will always pick the first value only. Even though you sort it, Mm. what will be happening based on the data, largest to smallest, you will be sorting, correct? Mhm. Or if you go for the brand wise, if you do the sorting, whatever it comes in the first, that will be taking that value. Okay. So that is what the minimum rule says. There should be a unique data. Mhm. If you have duplicates, VLOOKUP will always pick the first one. So to make it unique, you can go for remove duplicates, or you can go for counting the duplicates and which one is duplicate you can remove, or you can highlight the duplicates. There are various treatment you can do and find the unique list. Mhm. All right, so the rules are clear, I believe. Yeah. Yes. Right. So any difficulties about VLOOKUP or HLOOKUP, if you have, you can ask me today, because next class will be going for the complex situation or more advanced functions of our VLOOKUP uses. So if you're not clear today, you can ask me your questions. The next class, when you go for it, we cannot cover again the basics of VLOOKUP or HLOOKUP. So this is the time. This X lookup we will be covering in next session, right? XLOOKUP. If you wish, I can cover, not a problem, but Supriya will not be having that. You two can have. Can we take one example? Yeah, we'll take that in the Because next normally class. we don't use this VLOOKUP, XLOOKUP now. Yeah, that is what I'm saying. If you have Yeah. 365, you have got the more empowered functions called XLOOKUP. So Yeah. when organizers they have the 365, they will be using it. So if you wish, I can cover in the next class. I mean, day 4, the XLOOKUP Yeah. uses also. Don't worry about it. But in the meantime, let I just confirm with Supriya. Supriya, in your office, which version you are having? Yeah, we're having 365. Fine then. So let's go for 365 versions to understand the XLOOKUP formula in day 4. Don't worry, I will cover that also. Okay. Yeah. So Snehal, is that okay for you? Yeah. Okay. So only thing is you have to use official laptop, Supriya, for day 4 training. Okay, my office laptop. Actually, the thing is that like I have put down the papers for my last working day over here is on Okay. Thursday, Okay. and the next company I'm joining on Monday, and we'll be having session on what I meant to say. Next Okay. coming Saturday, Sunday is our session, right? Yeah, next coming Okay, Saturday, I'll try Sunday. to get installed on my personal laptop 365. Yeah, that is what I'm telling. I would like to give that options also. So Office 365, if you buy from Microsoft site, you have to Okay, go for subscription license. Okay. And that okay, will be like annually you have to pay somewhere around 800. okay. Then Every, it's every something year different. you have to pay. Yeah. But can I take a crack or something like that? ऐसा No, कुछ है? Office 365 crack nahi milega. That is what I'm saying. Then I'll So purchase it. साल मेरा uh, practice भी हो जाएगा. right. So that is what I'm going to give a helping hand since we are a Microsoft authorized service provider. तो हम अपने participants के लिए एक subsidized rate देते हैं. So entire 365, you will be getting all the flavors with 5,000 rupees, 4,999. That is only for our participants. We are not selling in the markets. So Okay. those who are our participants or B school students only or professors or lecturers, we have a subsidized price of 4,999. So it is up to you. I mean, if you can compare the things in the market also as well. If you're interested, you can purchase the subscription from us as well. Okay. Okay, I'll connect Yeah. separately. Yeah. Thank All you. right. So this is it from our day 2 people. Any doubt, any queries from our day 2 session? No, I mean to Okay. say the sessions are quite interactive and like not for a single moment we are feeling that we are getting bored as
at least for me, it's quite interesting. Thank you so much for the compliment. Even we are not realizing that it's now almost Yeah. 6 o'clock. Yes. Fine. So you can enjoy your rest of the match. By 9 o'clock, you will be getting the recordings also. Okay. Yeah. I do know it's a Sunday and World Cup final is there, so you must be curious to watch. But there is no good score even. It's maximum 230 so far. They have made it. But anyway, you can have a nice time. Okay. Okay. Thank you. Yeah, All right. sure. Yeah. So Thank you. I'm Bye-bye. just stopping the recording. Again, we'll be catching up in our next week's Saturday. Please mark your calendar. Don't miss the class, I would say. And day 3, our agenda will be the complete facelift of